I welcome all our honorable delegates in this very important webinar on amendments in GST. We are having C. Shashank Gupta ji, very prominent resource person. And before the start of the program, I will request all our honorable delegates to observe 2 minutes silence. 2 मिनट का मौन रखेंगे. हमारे काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच में नहीं है. ट्रांस हिंडन के भी काफी, गाजियाबाद के भी काफी सदस्य और उनके परिवार के सदस्य इस कोरोना पैंडेमिक में हमें छोड़ के चले गए हैं. तो उनकी आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए. उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट. ओम शांति शांति शांति. And in this, I think participants are joining. We'll start within a minute. Shashank ji, that in spite of this corona pandemic, our chartered accountants are always there to enrich their knowledge. They are the part of these virtual initiatives of the institute that shows our dedication, devotion, and commitment for the addition of the knowledge, which will be good not only for ourselves but also for the profession and in turn for the nation. And I think one of the most important benefit of these webinars is this, that we are engaged in knowledge enriching activities and are away from negative thoughts and negative news, which is everywhere through social media or electronic media in this time of corona pandemic. So that shows that the chartered accountants are converting this threat of corona pandemic into an opportunity for all of us and for the society and for the nation. So members are still joining. I will request Nikhil ji to please start the process. Nikhil Gupta. Good afternoon, everyone. I'm Sri Nikhil Gupta, convener of Transcendent City Studies. I hope all are sound and safe. Dear members, our study circle has organized various seminars and virtual meetings on various topics with the learned speakers and continue to do so. Today, we are conducting a virtual meeting on the topic Amendment in GST with learned speaker Shashank Gupta. Anuj Goyal ji is our chief guest. Now, without wasting much time, I hand it over the mic to Mr. Vipul ji for a brief introduction of Shashank Gupta. Vipul ji, you are on mute. Vipul ji, you are on mute. Hello everyone, myself Vipul Nagaich. Today's seminar is organized by Transcendent Study Circle CIRC of ICI, and today's topic is Amendment in GST. And our speaker for this topic is CA Shashank Gupta sir, and he's the renowned tax professional in the field of GST and indirect taxes in India, and he's having 10 years of experience. And so I would like to request Shashank Gupta sir to start this meeting. Thank you, Vipul ji, for the kind introduction. Our very own Central Council member. Shashank ji, I think Vipul ji has handed over to Nikhil Gupta ji for further. Okay. Thank you, Vipul ji. Sri Anuj Goyal ji, as we all know, a great personality and a Central Council member of Institute of Chartered Accountants of India. With 14 years
in council, 3 years in regional council, 6 years in branch. He contributed immensely in various capacities. Presently, he is the chairman of research committee, the oldest committee of the institute, and capital market investor protection committee of ICI. He is also vice chairman of corporate laws and corporate governance committee. I welcome CA Shashank Gupta ji and Anuj Goyal ji on behalf of our study circle. Yeah, thank you, Nikhil ji. Friends, this very important virtual CP program of the Institute of Chartered Accountants on amendments in GST. I think it is very important for the profession, and all of us are very well aware that if the GST could see the light of the day, if the GST could be implemented successfully, I think it is extraordinary efforts of the members of the Institute of Chartered Accountants of India. When GST concept was first introduced in Vajpayee government, since then the Institute of Chartered Accountants of India and Chartered Accountants put their 100% to see that how they can contribute, how they can learn, unlearn, relearn. We have organized lakhs of seminars, conferences, workshops, study circles, and number of publications were there. And then 2 terms of the Manmohan Singh ji government, and after that in the Modi government, 3rd year of the Modi government, ultimately on 1st July 2017, the GST could see the light of the day. And if the GST could be implemented successfully, it is only and only the members of the Institute of Chartered Accountants of India who are responsible. In spite of the fact that we are very well aware that chartered accountants were mainly in direct taxes, and very limited number of chartered accountants were here in indirect taxes. But in spite of that, even our senior members who were solely practicing in income tax ultimately came forward and got expertise in GST and are now contributing like anything in the area of GST. And the amendments, notifications on day-to-day basis, the changes which were there, I think no professional other than a member of the Institute of Chartered Accountants of India can learn and can disseminate and can implement for the trade and industry and for the public at large, for the society, and in turn for the government of this country. So I welcome all the honorable delegates present here on this very important topic of amendments in GST, and I hope that everyone is safe and sound. Friends, it is rightly remarked that an investment in knowledge accrues the best interest. I am delighted by the efforts made by the Transcendent CP Study Circle to organize this VCN for dissemination of knowledge about the amendments in GST. The GST regime is going to complete around 4 years now. Hailed as one of the biggest tax reforms of the country, as one nation, one tax. GST subsumed many indirect taxes which were imposed by the central and state GST and state. GST brought about a phase change on the tax phenomenon. Nikhilji, you can be on mute. Vipulji, you can be on mute. GST brought about a phase change on the tax phenomenon by redistributing the burden of taxation equitably between manufacturing and services. It has lowered the tax rate by broadening the tax base and minimizing the exemptions, has reduced distortions by completely switching to the destination principle, fostered a common market across the country, and reduced compliance costs. Friends, taxation regime plays an important role in accelerating the economic development of the country. With the GST journey on the move, the government has been proactively involved in resolving issues faced by the Indian taxpayers. There are still gaps between expectation and actual implementation of the GST in terms of a simplified tax structure, ease of doing business, and overall reduction in prices. But there has definitely been an overall positive impact in terms of macroeconomic growth and digitalization in the tax system. It has been a roller coaster ride for the government, industries, and consumers
due to the number of changes and reforms introduced in the past 3-4 years. These changes were primarily focused on rationalizing rates, simplifying procedures, and curbing tax evasion. Stabilizing one of the world's biggest online tax system, GST, was also a key focus area for the government. GST has been a challenging task, not because of intricacies in the law or the rules, but mainly because of the various challenges posed by the GST network. Of course, Shashank Gupta ji will throw more light on this. It is really a heartening aspect that we entered an era of GST, as it has made the life of all the professionals easier and more so for the trade and industry. Updating ourselves on the various issues has become a tremendous task, and I appreciate the efforts of the Trans-Hindon CP Study Circle for organizing today's BCM to impart knowledge on the amendments in GST. Today we have amongst us a very learned speaker, CA Shashank Gupta ji, who would be enlightening us with on the various amendments in the GST with his words of wisdom. Friends, as I conclude, I will request all of you that we are facing a very tough challenge for the mankind, this second wave of corona pandemic, and I am quite confident that all the chartered accountants will certainly ensure that they and their family members are vaccinated at the earliest. Institute of Chartered Accountants of India has taken initiative to organize vaccination camps everywhere. We are having it in Delhi, we are having it in Ghaziabad, we are having it in Noida, and we are trying to organize it in each and every place of the country so that chartered accountants and their family members can be vaccinated at the earliest and can fight from this pandemic corona in a better manner. So without taking your further time, I once again welcome CA Shashank Gupta ji, and may I request CA Shashank Gupta ji, our honorable guest speaker, for his deliberation and for his word of wisdom. Over to CA Shashank. Thank you, sir. Our very own Central Council member, CA Anuj Goyal ji, CA Nikhil Gupta ji, CA Vipul Nagait ji, CA Kunal ji, respected seniors and my dear friends in the audience. I am thankful to Trans-Hindon CP Study Circle for having given me this opportunity to address all the esteemed members who are there in the audience. Of course, we as a nation, rather as a global community, are going through very difficult times, and I humbly pray for the well-being and safety of each and every member who's there in the audience. So, commencing our deliberation for today, the responsibility which I've been given to discuss upon and deliberate upon is recent important changes in GST. I'll just take a confirmation. Is my PPT visible, Vipul ji? Yes. Yeah. So there are multiple changes which have been brought in GST. बहुत सारे changes GST में किए गए हैं, and the reason behind those changes is twofold. One is from legal aspect because of a legal requirement, and secondly from giving some relaxation specifically in purview of this second wave of corona pandemic in our country. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बात करना रिसेंट चेंजेस में कि गवर्नमेंट ने कहा कि मंथली हमको एक कंप्लायंस करना होता है जीएसटी में, जिसमें हमें अपने बिजनेस की एक रिटर्न फाइल करनी होती है, उसका टैक्स पेमेंट करना होता है, और रिटर्न फाइलिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं. अगर हम अबव थ्रेशोल्ड टैक्स पेयर हैं, जिसमें एक रिटर्न में जीएसटीआर 1 में हम अपनी आउटपुट सप्लाईज इंपोर्ट करते हैं, और दूसरी रिटर्न जीएसटीआर 3B में हम अपनी नेट टैक्स पोजीशन डिक्लेयर करते हैं और अपना टैक्स भी उसके साथ पे करते हैं. अगर किसी एसएससी की टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर थी, so for those cases government came out with a relaxation saying that they can file their GSTR 3B up to 15 days of delay. यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है नोट करने की, गवर्नमेंट ने लास्ट डेट ऑफ जीएसटीआर 3B को एक्सटेंड नहीं किया है, बस एक लेट फी वेवर दिया है कि नॉर्मली अगर आप 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो अगर आप 15 दिन बाद करेंगे उसके फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल,
तो जो नॉर्मली लेट फी एप्लीकेबल होती है ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ दिस जीएसटी रिटर्न, वो डिलेड फी प्रेजेंटली फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल एप्लीकेबल नहीं हो. Secondly, we all know that we cannot file this GSTR 3B return unless we have paid off the tax liability for that month. तो गवर्नमेंट अगर खाली रिटर्न की डेट बढ़ाती और टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं देती तो वो बेमानी होता. तो गवर्नमेंट ने यह रिलैक्सेशन क्या दिया है, अगर आपकी 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टर्नओवर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में थी और आप ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो नॉर्मली सरकार आपसे 18% का इंटरेस्ट लेती है ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने 50% का रिबेट दिया है ऑन एप्लीकेबल इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट कह रही है कि अप टू 15 डेज 9% रेट पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. अगर 15 दिन से ज्यादा का डिले होता है तो 15 दिन से जो ऊपर के डेज होंगे उस पर नॉर्मल 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट इज ITC 04. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुड्स से डील करने वाले सेक्टर में बहुत कॉमन होता है कि बिजनेसेस अपने गुड्स को जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास बेचते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. अगर आप जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है, आपके बिजनेस के लिए मैंडेटरी है कि आप ITC 04 रिटर्न पीरियोडिकली फाइल करें. जनवरी टू मार्च की रिटर्न जो ड्यू थी, गवर्नमेंट ने उसकी डेट में एक्सटेंशन दिया है. उन्होंने कहा है कि आप इसे 31 मई तक फाइल कर सकते हैं. Similarly, GSTR 1 for the month of April. For the month of April, the due date for this has been extended to 26th of May. So ideally, we should not be discussing this today because today is already 27th. But since this extension was also recently granted, we have taken it up. इससे रिलेटेड एक और भी क्वेरी है कि जो हम GSTR 3B अपनी फाइल करते हैं उसमें GSTR 2B के बेसिस पर गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दी है कि हम अपने क्रेडिट्स को अवेल करें. पहले GSTR 2A के बेसिस पे अवेलमेंट होता था. तो जब GSTR 1 ही 26 को फाइल होगी अप्रैल में, तो क्रेडिट अवेलमेंट कैसे होगा, कैसे हम GSTR 3B फाइल करेंगे, क्या हमें वेट करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दिया है, and we'll come to that clarification in due course. Next is restriction on availment of input tax credit. जब GST के सिस्टम को डिवाइस किया गया तो गवर्नमेंट ने एक रिटर्न का एलैबोरेट सिस्टम बनाया. GSTR 1 से 2A, 2A से वो अपना 2 फाइल करेगा, 2 से 1A बनेगी, 1A से फिर GSTR 3 फाइल होगा. But that system since 2017 to till date has not been implemented. Now, because that system was not implemented, we are working on a backup mechanism, that is filing of GSTR 3B and GSTR 1. Initially, government ने allow किया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे अपना क्रेडिट ले लीजिए, बट गवर्नमेंट को दिखा कि उसका बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फेक ITC अवेलमेंट पर भी आ रहा है. तो गवर्नमेंट ने ITC अवेलमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया. गवर्नमेंट ने कहा कि जितना ITC आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही आप ले पाएंगे. तो 20%, 10%, एंड प्रेजेंटली दिस कंडीशन हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 5%. कि अगर आपके 2A में 2B में अगर आप 10 लाख रुपए का क्रेडिट आ रहा है तो आप 10 लाख पर 5% और जोड़ लीजिए, मैक्सिमम उतना क्रेडिट आप ले सकते हैं. नाउ द रिलैक्सेशन दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर इज कि ये लिमिट आपको मंथ ऑन मंथ लगानी होती है. GST ऑडिट में ऑडिट ऑफिसर्स भी इसको बहुत क्लोजली स्क्रूटनाइज करते हैं. बट स्पेसिफिकली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड द मंथ ऑफ मई, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अप्रैल के मंथ में अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे क्रेडिट ले लीजिए. जरूरी नहीं है कि आप 5% की लिमिटेशन को कंप्लाई करें. आप जब अपनी मई मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो अप्रैल और मई दोनों मंथ्स की क्यूमुलेटिवली 5% की कंडीशन के हिसाब से नेसेसरी एडजस्टमेंट्स मई मंथ की रिटर्न में कर लीजिएगा और हम उसको प्रॉपर कंप्लायंस मान लें. तो रिलैक्सेशन ये है कि जो 5% आपको अप्रैल के मंथ में देखना था वो आप अप्रैल के मंथ की रिटर्न में नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, प्रोवाइडेड अप्रैल और मई मंथ दोनों मिला के आप 5% की कंडीशन को मई मंथ की रिटर्न फाइलिंग में रिपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज certain standard relaxations.
खाली रिटर्न फाइलिंग ही नहीं, बहुत सारे और भी काम लॉ में साथ साथ चलते हैं अदर देन रिटर्न फाइलिंग। जैसे कि डिपार्टमेंट साइड पर अगर बात करें तो ऑर्डर इशू करना, नोटिस देना, इंटीमेशन देना, सैंक्शन, रिफंड सैंक्शन करना, किसी चीज का अप्रूवल देना। एंड ऑन द पैरेलल साइड, ऑन द एसएससी साइड, अदर देन रिटर्न्स, अगर कोई टैक्स डिमांड है तो उसकी अपील फाइल करना, कोई नोटिस डिमांड है तो उसका रिप्लाई देना, कोई एप्लीकेशन, रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना, रिपोर्ट सबमिट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना। तो दोनों ही साइड पर, ईदर ऑन द साइड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑन द साइड ऑफ द एसएससी, अगर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की फाइलिंग डेट अप्रैल 15 और मई 30 के बीच में लास्ट डेट है, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल मई 31। तो डिपार्टमेंटल साइड पर अगर एनी प्रोसीडिंग, एनी इशुएंस ऑफ एनी ऑर्डर, नोटिस, इंटीमेशन, सैंक्शन, अप्रूवल एटसेट्रा बाय एनी अथॉरिटी, कमीशन और even tribunal, and on the side of the assessee, any appeal, reply, application, report, document, return statement to be filed by the taxpayer. So what we can say is this is kind of a generic extension which has been given so that any other compliance which is for the due date of which is expiring within this period, it is suitably extended. Next, small taxpayers. तो जो composition taxpayers हैं, उनको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो GSTR 4 फाइल करना है, the last date for filing of that GSTR 4 has been extended to May 31st, 2020. For taxpayers not in composition scheme but whose turnover was below INR 5 crores in previous financial year, for such cases, जो अप्रैल मंथ के लिए ये अपनी details of outward supplies they can file using IFF invoice furnishing, they can file by May 28th. And for GSTR 3B, they have been given a late fee waiver for up to 30 days from due date. तो 5 करोड़ या उससे ऊपर वालों के लिए जो 15 दिन है, वो 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए 30 डेज है, लेट फी वेवर अप टू 30 डेज। और इंटरेस्ट के केस में जहां डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स होगा फॉर टर्नओवर बिलो 5 करोड़, तो अगर आप 20 तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर अपना टैक्स पे कर देते हैं, तो कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपसे नहीं मांग रही है, आप बिना इंटरेस्ट के अपना टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन के डिले से अगले 30 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, मीनिंग 20 में 15 ऐड कर लीजिए और उसके अगले 15 दिन में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस 15 दिन में जब भी आप फाइल करेंगे उस पीरियड के लिए 9% इंटरेस्ट। और अगर आप ड्यू डेट से 30 दिन के बाद फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में फिर नॉर्मल 18% इंटरेस्ट रेट जो नॉर्मली एप्लीकेबल होता है वही एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लॉ इंट्रोड्यूस किया तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनली WTO से एक्सेप्टेड एक कोडिंग सिस्टम है हर प्रोडक्ट के लिए, हर गुड के लिए, हर आइटम के लिए, चाहे वो एक पेन से लेकर और एक शिप तक, एक एयरक्राफ्ट तक, उसके इंजन कंपोनेंट्स तक, हर प्रोडक्ट के लिए जो एक कोड दिया गया है, स्टैंडर्डाइज कोड दिया गया है, उस HSN को जो कस्टम टैरिफ में, कस्टम एक्ट में ऑलरेडी था, उसको GST में एम्बेड किया। लाइबिलिटी बनाई लोगों पे कि अगर आप इस टर्नओवर में हैं तो इतने HSN रिपोर्ट करेंगे, अगर आप इस टर्नओवर में हैं तो इतने HSN रिपोर्ट करेंगे। और सर्विसेज के लिए भी उन्होंने एक कोड लाए जिसको सर्विस अकाउंटिंग कोड बोला गया। अब इसके मैक्सिमम डिजिट ऑफ क्लासिफिकेशन 8 डिजिट है। अभी तक नॉर्मली 4 डिजिट HSN की रिक्वायरमेंट होती थी इनवॉइसेस पर, बट गवर्नमेंट ने अब 4 डिजिट से इसको एक्सटेंड कर 6 डिजिट कर दिया सिंस अप्रैल 2021। 6 डिजिट HSN पर जब बिजनेसेस मूव हुए तो यूनिक प्रॉब्लम्स एनकाउंटर की गई। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिक 6 डिजिट HSN था ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिक 6 डिजिट की जगह 8 डिजिट HSN था। लोगों ने जब 6 डिजिट अपने हिसाब से डिराइव करके उसको ऑनलाइन रिपोर्ट करना शुरू किया, तो वो गवर्नमेंट के सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आपका 6 डिजिट HSN नहीं है तो आप 8 डिजिट HSN ले लीजिए। अगर 6 डिजिट HSN अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप 8 डिजिट HSN अप्लाई कर दीजिए। और अगर 8 डिजिट HSN भी अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में फिर आप अपने GST सेल्फ सर्विस पोर्टल को एक मेल डाल दीजिए, उनको अपना टिकट रेज कर दीजिए और वो फिर आपके टेक्निकल एरर को रिजॉल्व करेंगे।
Certain further clarifications which were issued by the GST network on May 17. शशांक जी, जी सर. एक कम्युनिकेशन डेलीगेट्स को है, एज अवर जूम प्लेटफॉर्म इज फुल, so we are having the YouTube link also. I have shared that YouTube link on in the chat box, so you can communicate others who couldn't join on this Zoom platform to join this webinar by going on this YouTube link. Yeah, thank you. So while we were discussing that GSTR 1 की रिटर्न फाइलिंग को जो 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले हैं उनके केस में it has been extended, और GSTR 1 has normally been extended, filing of it has been extended till 26th of May. So now a question arose कि suppose उससे पहले कोई अपनी GSTR 3 भी फाइल करना चाहता है तो GSTR 2 भी अवेलेबल नहीं है, और GSTR 2 भी अवेलेबल नहीं है तो क्या GSTR 3 भी फाइल नहीं कर सकते? क्या GSTR 2 भी को अवेलेबल होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया. गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि GSTR 1 की डेट को IFF को हमने एक्सटेंड किया है, GSTR 2B विल ओनली बिकम एप्लीकेबल सिंस May 29. तो May 29 के बाद अगर आप अपनी GSTR 3 भरना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप GSTR 2B दे दीजिए. अगर आप May 29 से पहले अपनी GSTR 3B भरना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने वैसे ही 5% वाली रिस्ट्रिक्शन अप्रैल के लिए रिलैक्स कर दी है, तो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, अपने ओन जजमेंट के बेसिस पर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्रैल मंथ के लिए ले लीजिए, और गोइंग फॉरवर्ड फॉर द मंथ इन द व्हेन यू फाइल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मे, आप तब उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अपनी टोटल आईटीसी अवेलमेंट को 5% से अलाइन कर लीजिएगा, एंड दैट वुड बी वेरी वेल वैलिड रिपोर्ट. तो ये जो एक डाउट था गवर्नमेंट ने जीएसटीएन प्रेस रिलीज के थ्रू इसको भी क्लैरिफाई किया. एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, इस पर 2-3 रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, हम दोनों तीनों की बात करेंगे. एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन किस केस में बात आती है? जब किसी वजह से आपका कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का कर दिया गया है, आपने सुओ मोटो कराया है, डिपार्टमेंटल एंड पर हुआ है, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, आपको वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया था जीएसटी में कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन कोई भी एसएससी अप्लाई कर सकता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, और अगर वो अप्लाई करता है तो आफ्टर ड्यू प्रोसीजर्स उसका वो कैंसिलेशन रिवोक कर दिया जाएगा, उसका जीएसटी नंबर प्री वैलिडेट कर दिया जाएगा. अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक पहली रिलैक्सेशन ये दी कि अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जो डेट है वो उन्होंने May 30, अगर आपकी ड्यू डेट पर फॉल हो रही थी बिटवीन April 15 टू May 30, यानी कि आपके 30 डेज एक्सपायर हो रहे थे इस पीरियड में, तो आप May 31 तक इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं. 30 डेज में भी आगे एक्सटेंशन दिया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो हियर इट इज. टिल नाउ 30 days was the last time period up to which you could have applied for revocation of cancellation. If you wanted to apply for revocation of cancellation beyond 30 days, there was no statutory time limit. There was no statutory provision allowing for it. But now government has brought in a recent amendment. Government ने कहा है कि अगर आप 30 दिन के बाद और 60 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और वो आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन अलाउ कर सकते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन. अगर आप 60 दिन से 90 दिन के अंदर अपनी एप्लीकेशन मूव करते हैं फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो वो फिर एप्लीकेशन कमिश्नर को जाएगी, और कमिश्नर आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन आपका वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन उस बिजनेस का, उस एसएससी का अलाउ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिफंड फाइलिंग रिलेटेड अमेंडमेंट्स, और ये बहुत ही रिसेंट है, सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है. गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करी, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 में 18 को. अभी तक रिफंड फाइलिंग कैसे वर्क करता था? रिफंड का ब्रॉड फ्रेमवर्क ये था कि रिफंड जीएसटी में स्पेसिफाइड केसेस में अवेलेबल है. अगर आप उस स्पेसिफाइड केसेस में कवर हैं तो आप अपना रिफंड फाइल कर सकते हैं. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जीएसटी लॉ आपको अलाउ करता है कि आप पास्ट 2 years के लिए अपना जीएसटी रिफंड फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द ड्यू डेट.
अब जब पास्ट 2 years का जब आप रिफंड फाइल करते हैं, वंस यू हैव फाइल्ड दैट एप्लीकेशन, इट इज ड्यूली स्क्रूटनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट उसको देखता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, उसको क्लोजली स्क्रूटनाइज करता है, और इन द लाइट ऑफ फेक आईटीसी एंड फेक रिफंड्स, दिस ड्राइव हैज समवेयर, अब डिपार्टमेंट और ज्यादा कॉशियस होकर काम करता है। तो इस पीरियड में वंस यू हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन, सपोज यू फाइल्ड द एप्लीकेशन ऑन 1st of April, and then the department issues suppose some deficiency memo to you on 1st of May, और किसी वजह से आपका पार्शियल रिफंड उस क्लेम में डिसअलाउ होता है, तो जनरली क्या होता था, आप अफ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके अगर आप बिल्कुल टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाले टाइम पे अगर आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, तो आप 2 years के लिमिट से बाउंड हो गए। ये पीरियड जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी और डेफिशिएंसी मेमो इशू हुआ, ये पीरियड उसमें कवर नहीं होता था, और इसीलिए कुछ एक्सट्रीम केसेस में टैक्स पेयर्स को ये लॉस फेस करना पड़ रहा था। इस पर लिटिगेशन भी हो रहा था। गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को रियलाइज किया। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2 साल के लिमिटेशन पीरियड में, ये पीरियड जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन जब डिपार्टमेंट के पास फाइल कर देते हैं, उस डेट से स्टार्ट होके जिस डेट को आपको डेफिशिएंसी इशू की जाती है, उस डेट तक का पीरियड हम लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। So this is a relief for such cases, and this has now been duly notified. So the assessees or the taxpayers can avail the benefit. Whether this change is prospective or retrospective, I think, in my personal opinion, it's a procedural relief, and this should be retrospective in operation. Next is, कई केसेस में आप आईटीसी का रिफंड फाइल करते हैं, डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है। जनरली कोई टैक्स पेयर रिफंड जल्दी फाइल करना नहीं चाहता, एज लॉन्ग एज ही हैज विजिबिलिटी कि मैं इस क्रेडिट को यूटिलाइज कर दूंगा आपके बिजनेस। आईटीसी क्रेडिट रिफंड के लिए लोग तभी जाते हैं जब उनके पास आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए ऑप्शन नहीं होता। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी रिफंड की, अभी डिपार्टमेंट टाइम ले रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए। इन द मीन टाइम आपके असेसी के पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया, वो उसने पूरा भी कर दिया, उसको टैक्स पे करना है, पर आईटीसी उसके पास है नहीं क्योंकि रिफंड में आईटीसी ब्लॉक हो गया। तो अब एक ऑप्शन दे दिया गया है कि अगर आप चाहें तो एट एनी स्टेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन टिल द पॉइंट ऑफ डिसबर्सल ऑफ दैट रिफंड, आप वो अपना रिफंड विड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आप रिफंड विड्रॉ करेंगे, आपका अमाउंट आईटीसी क्रेडिट लेजर में, आपके ई क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा, और आप उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूटिलिटी ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ समय से ऑलरेडी अवेलेबल थी, बट नाउ द लीगल बैकिंग फॉर इट हैज आल्सो बीन ड्यूली नोटिफाइड बाय दिस नोटिफिकेशन। नाउ some recent important judicial pronouncements. Judgment on provisional attachment. इस पर काफी डिस्कशन हुआ जीएसटी सर्कल्स में इस जजमेंट को लेकर, और होना भी चाहिए था, बिकॉज where does this judgment come from? So this judgment relates to section 83 of GST Act. The case that we are referring to is Radhakrishnan Industries versus State of Himachal Pradesh. It's a Supreme Court judgment. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग द लोकल एनफोर्समेंट ने प्रोविजनल अटैचमेंट कर दिया असेसी के एसेट्स का। असेसी ने इस प्रोविजनल अटैचमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करी। हाई कोर्ट ने उस रिट को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिव रेमेडी मीनिंग कि जो आपका अटैचमेंट हुआ है आप उसके अगेंस्ट अपील में जाइए, और ड्यू चैनल्स ऑफ अपील्स में रिलीफ ना मिले तो हमारे पास थ्रू अपील इन हाई कोर्ट आइएगा। जब हाई कोर्ट ने रिट को रिजेक्ट कर दिया तो एसएससी ने उसके अगेंस्ट एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केस को सुना, समझा, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सबसे पहले सेट असाइड किया। उन्होंने कहा that the writ petition in this particular case was maintainable. Why was it maintainable? Even when alternate remedy was available.
The court said that in case of violation of principles of natural justice, even if an alternate remedy is available, even then the writ petition will be deemed to be validly filed and will thus remain maintainable before the High Court. So this is a very important pronouncement, because generally High Courts try to unburden themselves by taking recluse in alternate remedy. Secondly, Supreme Court ने specifically recognize किया that the section 83, which entitles the governmental authorities to undertake provisional attachment, is draconian in nature. और कोर्ट ने कहा कि before undertaking any provisional attachment, the revenue needs to strictly fulfill all preconditions for undertaking this provisional attachment. And moreover, the provisional attachment should only be undertaken where revenue's interest is endangered and provisional attachment is only means to protect such interest. यानी कि आपको provisional attachment के अलावा कोई और रास्ता अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ही आप provisional attachment में जाएं. Provisional attachment को abuse ना करें. Practically अगर देखें तो department is moving into provisional attachment very soon. They are using it as a regular tool, and which is of course hampering the business interest of any taxpayer. So this judgment comes as a huge relief. And the court also directed the commissioner कि आप जो provisional attachment करेंगे वो आप अपना speaking order pass करेंगे, recent provisional attachment order pass करेंगे और उसी के basis पर आप किसी का provisional attachment कर सकते हैं. Otherwise blanketly आप किसी केस में provisional attachment नहीं कर सकते. So in any cases where you're dealing with a difficult situation, you can utilize this case because this has come from Supreme Court and is applicable pan India. तो आप अपने केस में अपने SSC के लिए इस केस लॉ का बेनिफिट ले सकते हैं. Next is a very widely awaited issue, very highly anticipated. I think जो भी लोग GST में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर very eagerly they are looking forward कि कुछ strong jurisprudence, कुछ strong case laws उनके पास आए जिससे वो अपने SSC को ease of doing business को actually facilitate कर पाए. और पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि आप किसी GST में कहना कि क्रेडिट किसी को उतना ही मिलेगा जितना उसके सप्लायर ने टैक्स डिपॉजिट कराया. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C of CGST Act 2017. So which is the case law that we're talking about? We're talking about D.Y. Bethel Enterprises versus State Tax Officer. This is a Madras High Court judgment. Brief facts of the case. Petitioner ने कुछ goods purchase किए, supplier ने tax government को जमा नहीं कराया और डिपार्टमेंट ने IT से रिकवरी शुरू कर दी परचेजर से या petitioner से कि भाई आपके supplier ने टैक्स जमा नहीं कराया, आप एक काम करिए IT से रिवर्स करिए. पेटिशनर ने इस प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल करी और रिट में उन्होंने ग्राउंड लिया कि रेवेन्यू ने क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज द सप्लायर, बिकॉज GST is an indirect tax and being an indirect tax, the primary responsibility to deposit any tax is on the supplier, and since no action has been taken against the supplier, how could they proceed to recover ITC from them, that is the purchaser? The court took cognizance of the fact and they specifically observed that it is the supplier who did not deposit the tax and it is the supplier against whom the government should have taken strict action. And in this observation, the court also relied on the press release dated May 4, 2018, which said that in case of non-payment of tax by the supplier will not lead to automatic reversal of input tax credit. And accordingly, the High Court quashed the order against the purchaser or D.Y. Bethel Enterprises and remitted the matter back to revenue for undertaking fresh investigation against the supplier. तो कोर्ट ने पहली बात तो जो परचेजर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स थी उसको खत्म किया उस ऑर्डर को और रेवेन्यू को रीडायरेक्ट किया कि आप वापस जाइए और सप्लायर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इशू करके और उससे अपना टैक्स रिकवर करें. अभी तक की अगर बात करें तो जजमेंट लुक्स वेरी गुड. दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव
मैक्सिमम नंबर ऑफ द ऑडियंस वुड कनेक्ट विथ, उनको लगेगा बिल्कुल कोर्ट ने ठीक बात कही है, यही होना चाहिए, और ये एक फाउंडिंग स्टोन बनेगा आगे ऐसी जजमेंट्स आने के लिए. बट लेट अस लीगली स्क्रूटनाइज द जजमेंट. जो 2018 की प्रेस रिलीज कोर्ट ने इस केस में डील करी, एंड व्हेन वी गो ऑन टू लीगली स्क्रूटनाइज, इट इज इजी फॉर अस बिकॉज वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद जीएसटी. बट द कोर्ट बेंच which normally deals with tax, first of all, let us understand they come from a legal background, not necessarily dealing with one particular domain of tax, not particularly GST, so they may not be that well versed. Secondly, when the matter goes to High Court, the assessee always wants to engage senior advocates. So the senior advocates may not also be that deeply involved in the tax. While the judgment and the principle is fine, but legally the judgment is flawed, and why so? Let us discuss. जो प्रेस रिलीज कोर्ट ने रिलाई करी, वो प्रेस रिलीज नए रिटर्न सिस्टम के बारे में बात करती है. जो नया रिटर्न सिस्टम जीएसटीएन ने कहा कि हम इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे उन्होंने कहा था जीएसटीआर 1, 2, 3 हम इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर उन्होंने बैक स्टेप ले लिया और वापस आ गए जीएसटीआर 3 भी जीएसटीआर 1 पर. तो उस प्रेस रिलीज पर रिप्लाई करना जो ऐसे रिटर्न सिस्टम की बात कर रही है जो रिटर्न सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज फ्लॉड. सेकेंडली, जो असेसी ने अपील फाइल करी उसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, जो फंडामेंटल सेक्शन है जिससे कंडीशन लगाई गई है, उस सेक्शन को चैलेंज नहीं किया. तो उस सेक्शन को अगर चैलेंज करते तो उस पर अगर कोर्ट स्पेसिफिकली कुछ रूल करता, दैट वुड हैव रादर गॉन अ लॉन्ग वे. और ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये सेम प्रिंसिपल बहुत सारे हाई कोर्ट्स में और चैलेंज्ड है. कई जगह पर हाई कोर्ट्स ने नोटिस भी इशू किया हुआ है, एंड इन ड्यू कोर्स जजमेंट ऑन दोस पॉइंट्स इज आल्सो ड्यू टू कम इन सम टाइम. हाउएवर, इंडिपेंडेंटली भी अगर एक बात करें, मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि मान लीजिए आप किसी केस में कहते हैं, यहां तो वो केस था कि एसएससी ने टैक्स डिपॉजिट नहीं कराया और वो फॉर समहाउ रीजन क्लियर था, बट बात यही थी कि उसने जमा नहीं कराया तो मेरी गलती है. बट मैं एक और केस लेता हूं, मैं एक केस की बात करता हूं. मान लीजिए आपका एक क्लाइंट है, उसने किसी से 1 करोड़ रुपए की परचेस करी, उस पर 28% का जीएसटी पे किया, 28 लाख. 1 करोड़ 28 लाख की टीसीएस टीबीएस एडजस्टमेंट के बाद उसने नेट अमाउंट पे कर दिया. जो सप्लायर था, सपोज एक्स लिमिटेड, उसने आपके नाम की सेल अपनी जीएसटीआर 1 में चढ़ा दी. 1 करोड़ रुपए की सप्लाई, 28 लाख रुपए का जीएसटी, आपने वो क्रेडिट अवेल कर लिया. बट इज रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 1 डिटर्मिनेंट कि उसने वो टैक्स पे कर दिया हो? इट इज नॉट, बिकॉज जीएसटीआर 1 इज सिंपली अ टूल टू रिपोर्ट योर आउटवर्ड सप्लाईज, टू रिपोर्ट योर सेल्स, whereas the actual tax payment is happening through GSTR 3B. अब आप एक स्टेप और आगे चले गए, आपने कहा कि मैं तो साहब उससे GSTR 3B की कॉपी भी मंगा ली, कि तू मुझे GSTR 3B की कॉपी भी दे. अब उस जेंटलमैन ने, एक्स लिमिटेड ने 1 करोड़ की जैसे सेल आपको करी 28 लाख की, ऐसे ही 9 लोगों को और करी हुई है. टोटल उसने 10 करोड़ की सेल करी हुई है और 2 करोड़ 80 लाख का टैक्स कलेक्ट किया, और 10 लोगों को उसने वो GSTR 3B दे दी जिसमें 1 करोड़ रुपए की सेल और 28 लाख रुपए का टैक्स जमा, और 10 लोगों को पकड़ा दिया और सबको कह दिया ये भाई साहब आपका वाला ही टैक्स जमा. सो इवन देन इज द कंडीशन फुलफिल्ड? इट इज नॉट. So that is why the compliance of this particular condition is focused and embedded in the concept of impossibility, जिसमें एक Latin term भी है, lex non project ad impossibility. We cannot expect something to be done which is impossible to do. जो possible ही नहीं है, आप legally कैसे कह सकते हैं कि आप ये करके दिखाइए? As simple as किसी आप law कह दे किसी a person has to fly, वो खुद उड़ के दिखाए पर निकाल. So it cannot happen legally. You cannot bound any person to do something which is impossible. So on this ground, which would be a much more legally refined ground, on this it is expected that more judgments would follow. Next is concept of mutuality. हमारे इंस्टीट्यूट की अगर हम एग्जांपल लें, तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी हम सारे मेंबर्स हैं अपने इंस्टीट्यूट के. हम मेंबर जो प्रैक्टिस में हैं, हम अपनी मेंबरशिप सीओपी फी पे करते हैं, मेंबरशिप फी पे करते हैं.
और उस पर भी एक डिस्कशन हुआ, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि क्या इस मेंबरशिप फी पर जीएसटी पेबल होगा, नहीं होगा. And the fundamental reason behind that entire debate, and there were divergent views. There was a section which said applicable hoga, there was a section which said applicable nahi hoga. And because of this differing views, it took some time for the institute to understand and to finally implement, because they had to take a reasoned call. तो डिबेट क्या थी, क्यों इतना टाइम लगा, क्या रीजन था? वो ये था कि कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, बेसिकली इनकम टैक्स, दिल्ली गोल्फ क्लब की जजमेंट जिसमें कहा गया इनकम टैक्स में दैट अ पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ हिज ओन, द पर्सन कैन नॉट जनरेट इनकम आउट ऑफ हिज ओन. So basically, when a group of persons are dealing with their own member, they are one and the same entity, was the settled legal principle. And basis that legal principle, it was being argued that in GST, when a member is paying something to the association he's a part of, it is basically one and the same thing. But debate चल रही थी जुलाई 2017 से, और गवर्नमेंट ने कन्वीनियंटली इस फाइनेंस बिल में आकर इस चीज को क्लियर किया. उन्होंने transactions between an association and its members, they included this within the term of supply, which now make these transactions taxable. Basically जो हमारे इंस्टीट्यूट ने कॉल लिया वो ठीक कॉल लिया. But the biggest impact of this is कि ये बात गवर्नमेंट ने क्लियर करी बजट 2021 में, और इसकी एप्लीकेबिलिटी करी रेट्रोस्पेक्टिवली सिंस जुलाई 1, 2017. Now there are various types of associations. Even our army officers have their own associations where there are members. IAS association, IPS association, Civil Service Officers Association, and the entire country has multiple sorts of associations. कुछ लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया था on the conservative side, but कई लोगों ने अप्रोच ली थी कि हम टैक्स जमा नहीं कराएं. अब जिन्होंने ये अप्रोच ली थी कि वो टैक्स जमा नहीं कराएं, retrospectively they have been made liable कि आपको टैक्स जमा कराना था. Now today they are looking at not only the tax demand, but also the interest component, and more so also the penalty component. Maybe the penalty component can be argued, but the tax and interest in itself remain a big consideration. Next, I'll discuss some important amendments which were last introduced by the budget, because they are also to follow. So as we were talking about that, a beautiful return filing system was envisaged when GST was introduced, and had it been implemented, I think a lot of troubles for the government regarding section 16(2)(c), regarding fake ITC, regarding fake refunds, all of these could have been addressed. But because that system could not be implemented till date, government ने back-end steps लेना शुरू कर दिया, strong arming करना शुरू कर दिया. तो strong arming में जैसे उन्होंने credit को restrict किया, पहले आपके 2A में जो available है उसका 120%, then 110%, presently 105%, and this budget में they've clearly said that it is going to be nil. Basically जितना आपके 2A या 2B में specifically credit reflect होगा for any particular month, आप उतना ही credit avail कर पाएंगे, उसके over and above कोई credit आप avail नहीं कर पाएंगे. This is what the government is saying. On the other side, we have just discussed a judgment which has come from the High Court, which is saying that the onus is on the supplier and not the recipient. So this space is going to see huge litigation in the times to come, specifically because the government is going to be very stringent. अभी ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये बजट में उन्होंने कह तो दिया, but this provision has not been made applicable. So that is why we are still under the 5% limit. We are covered. Next is, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जब हमने बात करी कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो GSTR 3B में या किसी पर्सन ने जो ITC परचेज करी उसका उस सप्लायर ने टैक्स डिपॉजिट करा दिया, हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो हमारे पास बेसिकली टूल है GSTR 2B 2A, और हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने रेफर किया GSTR 1 को
और उसके बाद GSTR 3B को। रिकवरी प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी प्रोविजन स्पेसिफिकली बात करते थे GSTR 3B कि आपने टैक्स सेल्फ असेस टैक्स जो रिपोर्ट किया और डिपॉजिट नहीं किया। सेल्फ असेस टैक्स अगर आपने डिक्लेयर किया है कि मेरा ये टैक्स है और फिर भी अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो उसमें डिमांड एंड रिकवरी में देयर आर स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज, स्ट्रिंजेंट रिकवरी प्रोविजंस, बिकॉज आप सेल्फ एडमिट भी कर रहे हैं बट स्टिल आप वो टैक्स पे नहीं कर रहे। अभी तक GSTR 3B was primarily covered. Now the government has even proposed to cover transactions report in GSTR 1, and this was hugely required because we were seeing cases लोग GSTR 1 फाइल कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए कि सामने वाले को उसका क्रेडिट दिखने लगे, पेमेंट टाइम से आ जाए, बट फंड अवेलेबिलिटी नहीं है, फॉर सम अदर रीजन दे वर डिलेइंग फाइलिंग ऑफ GSTR 3B. Secondly, in case of fake ITC, it is very evident कि GSTR 1 में कुछ और रिपोर्टिंग होती है, GSTR 3B में कुछ और रिपोर्टिंग होती है। तो लॉ को मजबूत करने के हिसाब से, डिमांड रिकवरी को मजबूत करने के हिसाब से गवर्नमेंट has taken a valid step, that is covering of GSTR 1 reporting in the ambit of self-assessed tax. Next is attachment of property including bank account. अभी हमने एक प्रोविजनल अटैचमेंट पर एक केस लॉ डिस्कस किया, एंड द प्रोविजनल अटैचमेंट केस लॉ व्हिच सेज wherein the Supreme Court has stepped in and specifically directed the department to be very, very careful and very, very sensible in their approach of undertaking any attachment. Now, what has happened is that they have allowed that attachment of property including bank account. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि if proceedings initiated either during course of audit, inspection, search and seizure or demand and recovery, so in all such cases the property can be attached including bank account. अब यहाँ पर fundamental problem क्या है, practical problem क्या है? Practical problem ये है, if a property is attached, the assessee can still fight, can still go in for litigation, and can still, if he has a valid case, genuine case, he can contest it, he can win, and he can come back and get his property freed from this attachment. But the problem arises when we are seeing cases कि वहां पर आपने उसकी CC लिमिट, आपके लिमिट्स को अटैच कर दिया, आपके बैंक अकाउंट जिसमें आपकी रिसीट्स आती हैं उसको अटैच कर दिया. Now this is a direct attack on the lifeline of the business. अगर किसी का बिजनेस अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट ही अटैच आपने कर दिया, now he cannot make any payments. Any payments which are coming in his account are all seized, which means that his entire working capital is gone out of his hand. So this was turning out to be, और इस प्रेशर में कई बार क्या होता है, that it is not necessary that the department actually does this. डिपार्टमेंट अगर ये कहना भी शुरू करता था कि ऐसा हमारी बात मान लो हम जो कह रहे हैं, वरना हम ये कर देंगे, आपका बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, even this kind of pressure is enough for a huge number of assessees to get them to cow down to the demands of the department, which often results in injustice to the assessee where he has a valid case. So here the government needs to think through. They need to devise this. Supreme Court ने तो अभी अपने end से जो कह सकते हैं उन्होंने कहा, but it is also important for the government कि वो basically government का ideas के पीछे ये है कि वो fake ITC cases, fake refund cases में immediately जाकर seizure अपना ये attachment करते हैं, जिससे जो भी amount available है उस extent तक government का revenue safeguard हो जाए. But the problem is that the on ground implementation, the officers may not restrict themselves to the intention for which this amendment has been brought. So there is a huge disconnect, and it is important that the government steps in and gives a proper clarification as to when and where this extreme steps can be resorted to. Next is सड़क पर गाड़ी पकड़ने का काम, जहां पर जिसमें हमारा स्टेट first position पे है, UP is on first position, I believe, a very big contestant across the entire country.
And this fact came along when there was the national group which was discussing, and I highlighted this problem, and a lot of people from the team pointed out, from that committee pointed out that this is a unique problem in the state of UP. So championing the cause of catching all the vehicles on the road. So इस case में there were a lot of anomalies के आप IGST transaction है फिर भी SGST जमा कराया जा रहा था. I'll just list out what all anomalies. Transaction में bona fide error है फिर भी उसको extreme cases सबको एक ही cases में डाला जा रहा था कि आपका intentional tax चोरी है. Next is आपने किसी केस में उनको टैक्स पेमेंट के लिए बोला तो वो टैक्स पेमेंट के लिए 100% 200% टैक्स पेमेंट करा के आप फिर गाड़ी छोड़ना. सो देयर वर एन नंबर ऑफ डिफरेंट सिनेरियोस. और इस केस में अगर आप अपील में जाते थे तो नॉर्मली तो गाड़ी तभी छोड़ रहे हैं जब आप पूरा टैक्स या उनकी डिमांड डिपॉजिट कर देते थे. बट फॉर एनी रीजन इफ यू आर गेटिंग योर व्हीकल रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ अ बॉन्ड, सो इन दोज केसेस इफ यू आर गोइंग टू गो इनटू एन अपील, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि कितना अमाउंट परसेंटेज ऑफ डिमांड आपको पूरी डिपॉजिट करना पड़ेगा. अभी तक स्पेसिफाइड नहीं था. गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया दैट 25% इज मैंडेटरी, 25% ऑफ योर टैक्स डिमांड. अच्छा, सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस, लेट मी आल्सो मेंशन दैट litigation in GST is going to be a costly affair. Why costly affair? प्रेजेंट पास्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम्स की अगर हम बात करें, जिसमें सेंट्रल लॉज हो गए, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, उसमें अगर आपका कोई डिपार्टमेंट से डिस्प्यूट होता था तो फर्स्ट अपील पर आपका प्री डिपॉजिट कराया जाता था 7.5% ऑफ द टैक्स डिमांड. सेकेंड अपील के लिए 10% माइनस 7.5% ऑलरेडी डिपॉजिट, तो बेसिकली इंक्रीमेंटल 2.5% डिपॉजिट. तो ट्रिब्यूनल पे अपील आपकी 10% प्री डिपॉजिट में एडमिट हो जाती है. एंड बिकॉज इट वाज 10% ऑफ फंड्स इन्वॉल्वमेंट, तो असेसी वाज rather comfortable to contest it. But in GST, how it is going to work is, first appeal will involve 10% pre deposit, so there is a 2.5% price. But the biggest impact is when it goes to tribunal. So tribunal will appeal, for filing of appeal, additional 20% would be required. So total 30% of tax demand would be required to be deposited. So which means comparatively in the past periods, the present tribunal appeal file is a 10% pre-deposit compared with 30%. So the stakes are going to be really high. Commissioner empowered to call for information. Don't be surprised कि आपके किसी केस में, would you be surprised? अच्छा चलिए, let us take an example. You have a client X Limited. And X Limited से कुछ रेवेन्यू लीकेज हो गया, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, बोनाफाइड, नॉट बोनाफाइड, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करा. अब डिपार्टमेंट नोटिस दे रहे हैं, सम्मन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. उन्होंने आपके डायरेक्टर्स को नोटिस भेज दिया, समझ में आया. उन्होंने आपके एम्प्लॉयज को नोटिस भेज दिया, मैनेजर को, जो अकाउंटेंट को, समझ में. आपके बैंक से बैंक अकाउंट्स ले लिए, समझ में आया. आपके डायरेक्टर्स के स्पाउसेस को एक एक्सटेंट तक दे दिया, चलिए एक बार को मान लेते हैं रिलेटेड पार्टी. आपके रिलेटेड बिजनेस में सप्लायर्स से, आपके डीलर्स से, सप्लायर्स से इंफॉर्मेशन ले लिया, चलिए एक बार समझ में. So basically the point that I'm trying to highlight is, as long as something is happening which has a connection with the person in point, it is can be understood, ठीक है, उससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए. But here if you see the kind of power that has been given to the commissioner, it says by section 151 the commissioner is empowered to call for information from any person relating to any matter dealt with in connection with GST. So what should be the relation, to what extent he can go, that has not been specified. Again left to the court कि random इसमें भी notices issue होंगे, कोई उसके against court जाएगा, court पे directive देगा. But the extent of power, if you see,
because not everyone does business only for money. People also do for reputation, for their own reputation, for the kind of for at least a respectful living. And for a normal taxpayer, for a diligent taxpayer, एक notice भी अगर उसको आता है जो proper taxpayer है, तो वो वहीं घबरा जाता है कि भाई मेरे को notice किस बात का आ गया. Now imagine इसके केस में आप उसके suppliers को, उसके vendors को, उसके directors को, managers को, and that to random places अगर आप notices भेज रहे हैं to call for information, it can result in huge harassment, and hence it is important to plug this. यहाँ भी government का intent यही है कि fake ITC, फेक जीएसटी रिफंड्स के केस जहां भी हैं, वहां पर हम इतनी एम्पावर कर दे कमिश्नर को कि वो आगे जाकर इंफॉर्मेशन जहां भी सीख करनी है उसको सीख कर सकें, एंड दे डोंट कीप वेटिंग और दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सीकिंग एनी इंफॉर्मेशन. Next is IGST paid exports to be restricted. Till now, in any case of filing of, in any case of exports under GST, export of goods under GST, or exports under GST, two options were available for refund. One was कि आप LUT के अंदर एक्सपोर्ट कर दीजिए, बिना टैक्स पे कर एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो आपका ITC एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा. वो ITC आप कहीं और यूज कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपकी वो टैक्सेबल सप्लाई है, वरना जो बैलेंस बचे उसका आप डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर लीजिए. दिस वाज एन एज ओल्ड प्रोसेस व्हिच वाज देयर इवन अंडर प्री GST regime. Another option, and a rather comparatively a very easy, very convenient, very hassle-free option was given to exporters, wherein they could simply do exports on payment of tax, and if they did so, the filing of shipping bill itself was termed to be as the refund application. तो आपके IGST पोर्टल की इंफॉर्मेशन और आपके आइस गेट पे फाइल्ड इंफॉर्मेशन, आइस गेट जो कस्टम्स पोर्टल है, वो सिंक्रोनाइज जैसे ही होती थी, ऑटोमेटिकली आपका वो ड्यूटी जो आपने पे करी, जो GST पे किया ऑन एक्सपोर्ट्स, वो सारा रिफंड होके आपके अकाउंट में आ जाता. इसमें फायदा क्या होता था कि ITC रिफंड के लिए आपको लोकल डिपार्टमेंट में फाइल करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता था, असेसिंग ऑफिसर को परसुएड करना पड़ता था और फॉलोअप्स करने पड़ते थे, टाइम लगता था. बट कंपैरेटिवली IGST रिफंड्स in the experience of maximum exporters, it was very, very convenient unless until there was some technical error which duly got resorted after follow-ups. But as we see, the ease of doing, ease of giving any benefits also comes with ease of tax evasion. अब इस केस का जो फ्रॉड्स हैं, उन्होंने कैसे फायदा उठाया कि फेक ITC एंटिटी में क्लेम कराया, फेक एक्सपोर्ट्स कराए और सीधा IGST से बिना क्वेश्चन आस्क्ड उनको रिफंड मिल गया. तो बेसिकली डबल लॉस टू द गवर्नमेंट के पहले पॉइंट पर फेक ITC लिया गया, दूसरा उसका रिफंड भी ले लिया गया. अगर ITC का रिफंड लेते तो डिपार्टमेंट जाते, डिपार्टमेंट सवाल पूछता, शायद पकड़ लेता, बट क्योंकि IGST वाले मोड में चले गए तो कभी डिपार्टमेंट से इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ट्रेस नहीं कर पाया, ट्रेस कर पाया तो बहुत लेट हो चुका था और एक सब्सटैंटिव रेवेन्यू लॉस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हो चुका. तो यहां भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी. गवर्नमेंट ने कहा कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी, विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड कोई भी एक्सपोर्टर है हम कह देते थे कि भाई यू कैन ऑप्ट फॉर IGST पेड एक्सपोर्ट्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट दिस ओनली टू अ सर्टेन क्लास ऑफ एक्सपोर्टर्स as well as to certain products for exports. It is no longer going to be freely available to everyone, which means that the bona fide cases who will now be disentitled from claiming such refund will have no other option but to go for ITC refund. Next is relating to, in fact, most of the changes in the budget, if you see, 70% of the changes in GST which were proposed by the budget, they were all related to rather indicating towards fake ITC availment or fake
नॉन जेन्युइन GST ITC रिफंड्स। तो इसी कड़ी में गवर्नमेंट ने एक और स्टेप क्या लिया? गवर्नमेंट ने एक और स्टेप ये लिया कि आप गुड्स के केस में अगर आप एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहती है एक्सपोर्ट इन केस ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसके केस में इसी प्रिंसिपल सन इंडस्ट्रीज की सुप्रीम कोर्ट की सेलिब्रेटेड जजमेंट है, जिसमें फैक्ट्स ये थे कि एक वेसल यानी शिप इंडिया से गुड्स ऑनबोर्ड करके चला एक्सपोर्ट के लिए, टेरिटोरियल वाटर्स तक पहुंचा और पहुंचने से पहले सिंक कर गया, यानी कि जो कंट्री में गुड्स जाने थे वहां तक कभी कुछ पहुंचे ही नहीं। क्या इस केस को एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा? दिस इज अ जजमेंट ऑफ 1940s and 50s, और तब कहा गया था, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स वाज मोर और लेस सिमिलर, इट वाज सेड दैट द गुड्स were taken outside India to a place outside India, this will be deemed as exports. So basically, in case of exports, your shipping bill, your bill of lading, your export general manifest, all these documents were considered as valid evidence, genuine evidence, substantiating export of goods from India. कि आपके गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो गए, हम कैसे मान लेंगे कि आपका शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ लीडिंग हो गया, कि गुड्स वेसल पर चढ़ गए, शिप हो गए, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट मतलब शिप भी इंडिया से निकल गया, तो अब तो गुड्स आपके एक्सपोर्ट हो गए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर सर्विसेज की केस की बात करें तो लेट द साइड GST इवन इन सर्विस टैक्स रिफंड्स, बिकॉज सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर। तो सर्विसेज के केस में नाइदर देयर इज एनी शिपिंग बिल, नॉर एनी बिल ऑफ लीडिंग, नॉर एनी एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो सर्विसेज के केस में हमेशा से द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट टू एविडेंस दैट एनी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज टेकन प्लेस फ्रॉम इंडिया was the FIRC foreign inward remittance certificate or the bank realization certificate or the BRC. तो लॉ कहता था कि भाई पहले अपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस दीजिए, सर्विस टैक्स रिटर्न्स दीजिए या GST रिटर्न्स दीजिए और अपने FIRC BRC दिखाइए, और वो भी RBI की टाइम लिमिट के विद इन। अगर आपका पैसा आ गया है या आपने RBI से एक्सटेंशन ले लिया तो एक्सटेंशन दिखाइए, और उस BRC और FIRC के बेस पे हम सर्विस में आपको एक्सपोर्ट रिफंड देंगे। अगर नहीं है किसी केस में, हम नहीं मानते आपने एक्सपोर्ट किया, हम आपको रिफंड नहीं। बट दैट वाज नॉट द केस व्हेन वी स्पोक अबाउट एक्सपोर्ट इन केस ऑफ गुड्स, बिकॉज गुड्स आर टैंजिबल and once they've crossed the customs barrier, they are due to be exported. But here also, because of the concerns arising out of the fake or non-genuine GST refunds, government ने कहा कि आप GST रिफंड तो हम आपको दे रहे हैं गुड्स के केस में, आपके शिपिंग बिल, बिल ऑफ लीडिंग और EGM के बेस पर, बट यू नीड टू कम बैक टू अस एंड टेल अस दैट द फॉरेन करेंसी, foreign convertible exchange has been received within the time period prescribed by RBI, so that अगर किसी का फेक केस है तो वो खाली डब्बा इंडिया से कंटेनर उसने बाहर भेज दिया, तो खाली डब्बा तो नहीं भेजा, एक्चुअली उसको फॉरेन रेमिटेंस आया है नहीं आया है, वो अब गुड्स के केस में भी इंश्योर किया जाएगा, चेक किया जाएगा विद इन फेवर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट आया नहीं आया, और अगर विद इन टाइम लिमिट नहीं है तो RBI से एक्सटेंशन होना चाहिए, उस एक्सटेंशन के अंदर आ गया तो भी ठीक। अगर किसी केस में ये रिफंड उस टाइम लिमिट में नहीं आया तो उतना प्रोपोर्शनेट रिफंड आपका या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आपको ऑलरेडी रिफंड दे दिया गया है तो उस केस में उतना प्रोपोर्शनेट रिफंड जितना आपका नॉन रियलाइज्ड है आपका फॉरेन एक्सचेंज, उतना प्रोपोर्शनेटली अलोंग विद इंटरेस्ट आपसे टैक्स पेयर से रिकवर कर लिया जाए। And with this, we cover all the recent amendments relating to GST. I will now request Anuji, if there are any queries, because I think we have substantive time, we can take the queries. Yeah, thank you, Shashank ji, for very nice deliberation. At Zoom platform, we are
having 100% capacity. It is Zoom platform is full and lot number of members are there on YouTube also. So some of the members want to ask the queries. Akash Gupta ji, you can unmute and ask the query. Devendra Bhatija ji, you can unmute and ask the query. Richa ji, Vijendra Gupta ji, Surendra Kumar ji, you can ask your queries. You can unmute and ask your query. Alok Agrawal ji, you want to ask any query? Manu Tayal ji, you can ask your query. I think a lot number of members are, yeah. Manu ji, please ask your query. जी सर मेरी क्वेरी सर ये है, मेरा क्लाइंट था तो सर वो फेक इनवॉइसिंग में सर वो आया था. आई एम ऑडिबल? यस यस. सर वो फेक इनवॉइसिंग में आया था तो मेरे क्लाइंट पे सर 1 करोड़ का. हेलो. हाँ मनु जी पूछिए. तो मेरे क्लाइंट पे सर 1 करोड़ का टैक्स लगाया गया कि आपने फेक इनवॉइसिंग करी है, 1 करोड़ का टैक्स लगाया. मैंने कहा ठीक है, मेरे क्लाइंट ने करी, आई एक्सेप्ट माई 1 करोड़ रुपीज. लेकिन जो सामने वाले जिसको हमने फेक इनवॉइसिंग करी उससे आउट ऑफ दैट 1 करोड़ उससे करीबन 70 लाख रिकवर कर लिए गए. तो मेरे को 70 लाख का सर क्रेडिट मिलना चाहिए. मेरा सर कमिश्नर के सामने ये था कि जब आपने 70 लाख वहां से रिकवर कर लिए तो आप मुझसे सर 1 करोड़ कैसे रिकवर कर सकते? आप मेरे को 70 लाख का क्रेडिट दीजिए, मेरे को 30 लाख दीजिए आप. या शशांक जी, you can stop screen sharing. शशांक जी. Okay sir. Okay. Yeah. जी सर. So your query is valid. See, from a practical standpoint, and this has also been a point of discussion since very day one. Because अगर आप सेक्शन 16 की स्कीम को देखें तो वो स्कीम ही ये है कि भाई सप्लायर तो 73, 74 में कवर्ड है ही, जो आपने टैक्स जमा नहीं कराया, गलत जमा कराया, बट इक्वली द रेसिपिएंट इज आल्सो लायबल फॉर द आईटीसी दैट ही हैज नॉन जेन्युइनली अवेल्ड. तो ये भी एक ग्राउंड है जो मैंने रिट पिटिशंस आपको बताई, दैट सेवरल रिट पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड ऑन दिस ग्राउंड दैट there are that how can the supplier, how can the recipient be made liable for the tax not deposited by the supplier. From a strict legal standpoint, if you see the strict legal standpoint में जब सेक्शन 73, 74 की हम बात करते हैं, आप उस पर्सपेक्टिव से इसको देखिए, आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अगर आप उसे लीगल स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो लीगल स्टैंड पॉइंट बड़ा क्लियर कट ये कहता है कि आपको वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा जो आपने गलत अवेल किया. नाउ व्हाट योर रेसिपिएंट हैज डन, व्हाट योर सप्लायर हैज डन, दे आर इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर्स अंडर GST and the law will take its course on them separately. Logically your contention is correct, but legally the department's proceedings also have a legal stand. सर लेकिन आप 1 रुपए सर 2 बार 2 जनों से कैसे रिकवर कर सकते हो सर? ये तो बिल्कुल ही कहीं सस्टेन ही नहीं होगा कहीं भी. आप रिकवर करो लेकिन आप एक ही चीज 2 लोगों से रिकवर करोगे, ये तो बहुत ही ज्यादा हरासमेंट हो गया. आपने उससे भी ले लिया, मुझसे भी ले लिया, मैं किससे रिकवर करूं, क्या करूं? So this point I would like to repeat, as I told you, is already something which has been duly discussed and highlighted. आप ये point हम और आप आज discuss कर रहे हैं. When GST was about to be implemented and GST model laws were available, even then our institute's committee also took up this point with the GST council that this is basically you're asking 2 rupees in place of 1. और रादर अभी तो आप एक चेन की बात कर रहे हैं, आप और मैं कहता हूँ पूरी चेन में अगर 10 लोग हैं या 20 लोग हैं तो ये उतने गुना भी हो सकती है अगर हर किसी से रिकवर किया जाए. सो दिस पॉइंट is being discussed, deliberated, mooted and is legally challenged. डिपार्टमेंट जो अपना काम कर रहा है आप यहाँ उनसे रीजन कर लीजिए, बट जो वो अपना काम करते हैं आप अपना जो पॉइंट रेज कर रहे हैं उसके बेसिस पर you can certainly go ahead and argue it as part of your litigation. थैंक यू सर. थैंक यू. Yeah.
Prasanta ji, please ask your query. Yes, sir. I'm audible. Yes, yes. Yes, sir. Sir, my question is, actually, while depositing last April month's GST, we have by mistake forgotten deposit of GST of RCM while filing GST 3, and by mistake we have forgotten. It's a huge amount. And very next day we have deposited this, and DRC 3 you have filed. Is it okay, the procedure? We have compared this. My question to Gupta sir. So tax, you've already deposited, right? Deposited, and once it is deposited means it will land into cash ledger. Unless I file a return, it will not be utilized. So I have to file a DRC 3 because we have to utilize it. So I cannot file through GST 3B because again I have to wait for 1 more month. Correct. In that case, full 1 month's interest they will charge. I mean GST authority will charge. So is the procedure is correct for this type of thing, because the amount is huge. We have done this procedure, and subsequently this RCM what GST we have paid, and next month also can we take the input credit, because it is not reflected in our GST 3B return. So I'll give you my view on it. So for the very reason that you highlighted, I think there are 2 points involved. One was that you were trying to save the interest component, and secondly, now the point is that how will you avail the ITC, and whether the entitlement of ITC gets challenged because you paid the tax through GST DRC 03. So my thought on this is that what is a better way to do it is that you pay your tax liability in the next month. That would have been a much better way to do. But since what has been already done is done, so your input tax credit is a substantive benefit, and there is enough jurisprudence that the payment of tax through DRC 03, that's just a procedural aspect. That's because the way the systems has been designed, right, under GST. So substantive benefit cannot be denied for any procedural infringement. So taking into account that principle, in my personal view, your ITC availment remains intact. Since you've already deposited that tax in this month, you can argue you're not liable for any interest. And in the next month, you can avail the credit. Most likely, once the audit is initiated, you're likely to be put up with this question on the challenging the entitlement of ITC by the audit officers, and you can duly contest it with all the legal backing, which will only multiply in the times to come, and you can utilize that and sustain your eligibility of ITC. But the procedure of DRC 3 is, I believe it is correct, because you cannot wait for 1 month because of a mistake, and a huge interest impacts is there because our tax is in crore section. So if by mistake we have missed out some of the payments around payments have not been considered. So that's why we thought of this. The procedure is right to to avoid the interest which will come around 10-12 lakhs. Not an issue, sir. Not an issue. I'm not saying what you have done is wrong. Never did I mention that. And you can go ahead with it. You can avail your ITC in the next month. And since you've already paid the tax, no interest. Thank you. अनुज जी आप म्यूट करें. Sir, you are on mute. Yes, thank you. So Siddharth ji is there. Siddharth ji, please ask your question. Yes, sir. Sir, actually, basically, I've got 3 questions. First, actually, आपने डिस्कस किया था अभी वो 10% प्रोविजनल जो हम लोग एक्सेस ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 10% अबव टू जो अपना है वो अपना 18 अक्टूबर 2019 को शायद नोटिफिकेशन आया था, एज फार एज आई रिमेम्बर. तो सर उससे पहले जो हम लोग सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इनपुट लेते थे, तो क्या वो सस्टेनेबल है अगर वो 2A में उस समय रिफ्लेक्ट नहीं करता था बिफोर 18 अक्टूबर, बिकॉज द सेड नोटिफिकेशन वाज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. तो माय कंटेंशन इज दैट अगर 18 अक्टूबर 2019 से पहले 3B और 2A मैच नहीं कर रहा है और उसमें नोटिस आता है, तो वी कैन इजीली गेट इट ऑफ कि अभी उस समय तो 2A का कांसेप्ट था ही नहीं. वहां पर रूल सेक्शन 16 का होता था और रूल 36 से उसको रीड किया जाता था.
तो उस समय 36(4) नहीं आया था, तो हम 36 1 2 3 अगर लेके चले तो हम तो इनपुट क्लेम कर सकते हैं अगर वी आर सेटिस्फाइंग ऑल द अबव रूल्स 36 का। एक तो ये हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन है, जो अपने कभी जैसे डिमांड क्रिएट होता है एंड वी गो फॉर इसमें अपील में जाते हैं, तो वहां पर ऑप्शन दिया जाता है तो 10% पेमेंट ऑफ द ड्यूटी अमाउंट। तो सर केस में क्या हुआ कि हमने इनपुट से एडजस्ट कर दिया 10% ऑफ द ड्यूटी अमाउंट, तो क्या सर हम उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो हमें कैश में रिवर्स होगा? क्योंकि इनपुट जो होता है वो कैश में रिफंड नहीं होता जहां तक मुझे पता है। बट यहाँ पर तो हमने और हम केस जीत भी गए, फेवरेबल डिसीजन आ गया हमारे फेवर में। नाउ द पॉइंट इज, जो हमने 10% पे ऑफ किया है उसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकें? एंड सर द थर्ड क्वेश्चन इज, जो अभी आपने एक वो बताया था तो 36 जो अभी एक प्रोनाउंसमेंट आया था जजमेंट को कि सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया तो यू कैंट फोर्स द बायर कि भाई आप पे ऑफ करो। देन सर रूल 36(4) वहां पर एप्लीकेबल होगा? यहाँ 16(2)(c) को उसने 16(2)(c) को रेफर किया मद्रास हाई कोर्ट आई गेस। तो सर 36(4) तो वहां पर आ ही गया ना। फिर अगर सामने वाले ने चढ़ाया नहीं और उसने पे ऑफ भी नहीं किया तो भी हमारी कैसे लायबिलिटी हुई? दीज आर द 3 क्वेश्चंस। वंडरफुल सर, आपने क्वेरीज भी खुद पूछी हैं और लगभग आंसर भी खुद ही दे ही दिया है। मैं उसको बस वैलिडेट कर देता हूँ। हाँ जी सर। जैसा आपने पहला पूछा कि 2019 से पहले ये कंडीशन नहीं थी, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि कहीं ऑडिट अथॉरिटीज आपको आकर बोल रही होंगी कि आपका क्रेडिट Yes, फिर sir. 2A में नहीं था, उस Yes, क्रेडिट sir. को आप रिवर्स करते हैं, उतना ही क्रेडिट अलाउ करेंगे जितना 2A में है। Sir, actually, I've Or challenged it. you've challenged it. That's a very valid, sustainable challenge, and your contention is absolutely correct. Please go ahead with it. Okay. सेकंड, आपने क्वेश्चन पूछा कि हमने एक अपील फाइल करी, उसमें 10% प्री डिपॉजिट दिया था। प्री डिपॉजिट हमने क्रेडिट लेजर से दिया था, और अब क्योंकि अपील हमारे फेवर में आ गई है, क्या हम 10% वो जो 10 रुपए दिए थे वापस ले सकते हैं? और वापस लेंगे तो वो कैश में मिल सकता है क्या? तो इसमें आई थिंक द डिपार्टमेंट विल ओनली recredit it back from where you had paid it. सर ऑप्शन ही नहीं होता आईटीसी को क्रेडिट करने का उनके पास तो। So then you can challenge that there is no procedure, because either then the department is foxed. The department will then either give you in the form of cash, or they will have to do something about it. What are they saying presently? Sorry? What are they saying presently? Then how will they? Sir, one refund has been sanctioned, but it has yet not been credited into my account, into our account. Actually, there are 2 refunds. And for one refund they have sanctioned, but no cash has been credited in our account, nor in the GST account also. Okay. And the second, actually this happened, so I stopped there only, just because कि sir obviously बात है sir, कुछ गलत ना हो जाए इसके लिए आप समझ रहे नहीं, आपके एंड से कोई गलती नहीं है। आप उनके पास there is no mechanism to recredit it back. So how is it a problem at your end? You please file your claims, because if they don't process it into your account beyond a point, you will also be entitled to interest component on that. Okay. And this is a problem at the department's end, and they need to rectify it. एक reasonable period wait करिए, follow-ups दीजिए। अगर वो नहीं करते हैं उसके बाद you can move for payment along with interest to the higher floors. Fine, sir. Last आपका condition था, last question था आपका 16(2)(c) plus 36(4). Of course, the answer is same, since 16(2)(c) the substantive law is in itself in question. 36(4), which is dependent bent upon 16(2)(c), of course that is also subject to equal amount of charges. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Shashank ji. And Ayush Banka ji, you want to ask the question? Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, yes, yes. Okay, sir. I need to ask, in case of cancellation suo moto, the 30 days period is right, and right now you said like 30 to 60 is granted by additional commissioner and 60 to 90 by commissioner. If 90 days are over, then what can an SSC can do, sir? So see, sir, this is a specific benefit, and specific guidelines have been given. In fact, the notification which has recently come in, notification number 15, it only says that we will empower. Till now, neither of those were empowered.
only 30 days was mentioned. Now they have been suitably empowered, and a circular has also been issued. And through the circular, we know that how it is going to function. That is basically between 30 to 60 and 60 to 90. So if anywhere your 90 days are getting expired within this period of April 15 to May 30, you can take a recluse in the extension or up to May 31, and basis that you can say that you would like to get in the revocation filed. Other than that, I am afraid per se there is no relief. You can take a chance by filing a writ, maybe if you have strong enough grounds, if you have strong enough valid reasons. Yeah. Sir, actually the 30 days time was over in 90 days time was over in the month of March, and there was a due case that SSC father got died in this pandemic, and there were lots of disturbance in his family, so he was not able to file the 6-month returns continuously, and department jurisdictional officer had cancelled his registration in the month of December. So 90 days were over in the month of March. When he come to me in April, then again that lockdown and pandemic was at his boom. So my suggestion is that you have a genuine bona fide case, and it's a recent case, not very old. Without losing any further time, file an application with the commissioner, directly with the commissioner. Meet him, highlight your the problems that have been faced. See if he gives any relief. If he doesn't, you have a good ground to approach the High Court. Okay, thank you, sir. Thank you. And then Seema Tosniwal ji, you want to ask the any question? Seema Tosniwal ji, you want to ask any question? Sapna ji, you want to ask any question? You can unmute. Seema ji, please. Seema ji, ask your query. Seema Tosniwal ji, ask your query, please. मनु जी पूछिए. यस सर, मेरा एक सर क्वेश्चन दोबारा से ये है सर, जैसे 1364 जो 364 रूल है सर, एक तो वो बिल्कुल ही इनवैलिड है जब तो सेक्शन 6 को वो ओवर रूल कर रहा है. चलो किसी तरह 364 हमारा कर भी गया, तो सर हम GSTR 2B का ले रहे हैं. मेरा कहना हो सकता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, 364 में लिखा है 37 सबसेक्शन सेक्शन 37 सबसेक्शन 1. अब सर GSTR 1 अपनी 11 तारीख को हमने फाइल कर दी, तो वो तो सर अपने 2B में आ जाती है. 2B 2B मान लीजिए हमने लेट करके 20 तारीख को फाइल करी, वो 2B में ना आकर उस मंथ के 2A में आती है. लेकिन सर जैसे कि आप लोगों ने 1 फाइल कर दी, भले ही हमने लेट फाइल करी, लेकिन हमने 37 सबसेक्शन 1 के अंदर ही फाइल करी हुई है. तो सर हमें कॉन्ग्निजेंस 2A का ही लेना चाहिए, 2B का नहीं लेना चाहिए. क्योंकि सर अगर हम कोई चीज लेट फाइल करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने उस सेक्शन के अंदर फाइल नहीं करी 37(1), क्योंकि कहीं भी उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप 36(4) के अंदर कि आप 2B देखिए. उसमें सर सिर्फ सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 लिखा हुआ है. और व्हाट वी आर फाइलिंग GSTR 1 दैट इज अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1. जी सर. जी मनु जी, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, और आप बहुत अच्छे से अपनी क्वेरीज को पूछ भी रहे हैं और कुछ जवाब भी दे रहे हैं. तो उसी कंटिन्यूएशन में आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, एंड सी 2B and 2A आर बोथ गवर्नमेंट टूल्स. जी सर. इसमें बस एक सजेशन हो सकता है कि अगर असेसी रिस्क कवर्स है और 2B 2A में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो आने वाले टाइम में क्योंकि डिपार्टमेंट 2B को ही बेस बनाएगा, तो आप 2B से चले. अदरवाइज डिफरेंस ज़्यादा है और आपको क्रेडिट का लॉस हो रहा है, तो आप 2B पे भी जा सकते हैं, रिस्पेक्टिव एक्चुअल अवेलमेंट पे भी जा सकते हैं. बस उसमें आपको लिटिगेट करना पड़ेगा. और लिटिगेट आप अपने, अगर एक केस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में हैं, सबके पास कम से कम 10 केस होंगे जो सेम पॉइंट पर लड़ने के लिए तैयार बैठे. तो इट इज गोइंग टू बी एन इंडस्ट्री इशू, इट विल बी contested across India. So don't worry, the entire community is with you. थैंक यू सर, थैंक यू. बस मैं अपना व्यू कंफर्म कर रहा हूँ. थैंक यू मनु जी, थैंक यू. अरविंद अग्रवाल जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी. अरविंद अग्रवाल जी. या हाँ, शशांक गुप्ता जी नमस्कार. गोयल जी नमस्कार. सर ये मेरी क्वेरी. हाँ जी. मेरे एक एसएससी का कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया उसने बाहर से, और उस पे जो भी के रेट से,
और अभी उसका आउटपुट 5% है, बट इसका इनपुट जैसे सीमेंट उनका इनपुट है 28% पे, पर आउटपुट जो कर रहे हैं 5%, तो वो कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट था वो भी पड़ा रह गया। प्लस अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जैसे कि है 5% आउटपुट बन रहा है, 28% इनपुट, तो 23% का डिफरेंस इन्वर्टेड ड्यूटी में ये भी उसके पास अवेलेबल है। अब वो तो उसको कभी कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा, तो क्या उसको कैश रिफंड होगा ये कैसे होगा? मतलब सर, कैपिटल गुड्स आर नॉट कवर्ड फॉर द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आपके केस में जो केस बन रहा है रिफंड का, वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बनेगा। और but sadly neither services nor capital goods are covered. Capital goods are rather not covered for any case of refund. So sadly that credit will have to be carried as long as it pertains to the capital. Inputs पे अगर inputs पर tax rate ज्यादा है, आपके बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर inputs पर tax rate ज्यादा है और output पर कम है, input goods पर, तो उस केस में certainly आप inverted duty structure में refund claim डिपार्टमेंट से कर सकते हैं। तो वो फाइल करेंगे, कैश में रिफंड होगा कि वो क्रेडिट करेगा अकाउंट में? क्रेडिट करेगा तो यूज तो कर नहीं पाएंगे उसको हम लोग फिर। नहीं, आपको अगर रिफंड फाइल करेंगे तो आपको कैश ही आएगा ना सर। कैश आएगा, ओके। या थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। देन आकाश जी, यू वांट टू हैव एनी क्वेरी? सुरेंद्र कुमार जी, आलोक अग्रवाल जी, सतीश गोयल जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी, अनम्यूट। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सतीश जी। सर हमारे क्लाइंट ने अपनी GST 1 में B2C की सेल में 44 लाख की जगह 11 लाख गलती से फीड कर दिया। उसी के ब्याह पे 3B फाइल कर दी, टैक्स भी 11 लाख में जमा कर दिया। जब हमने उनका इनकम टैक्स का ऑडिट किया तो हमें इसकी गलती पता चली। हमने 33 लाख पे इंटरेस्ट के साथ DRC 3 से टैक्स जमा करा दिया। GST की एनुअल रिटर्न फाइल करी तो ये गलती उस पर भी ठीक कर दी, लेकिन GST की किसी और रिटर्न में 1 में और 3B में ये हमने कुछ नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं किया आगे की किसी भी रिटर्न में। तो ये क्या ठीक है? DRC 3 अभी तक पेंडिंग है डिपार्टमेंट के एंड पे, उस पे मतलब ऑफिसर ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और उस फाइनेंशियल ईयर के बाद का सितंबर मंथ भी निकल चुका था सर। हाँ सर, वो निकल चुका था क्योंकि ऑडिट सितंबर के बाद ही हुआ था। तो फिर हमने दिसंबर में या अक्टूबर में शायद रिटर्न फाइल किया था। तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं था जो आपने किया, वो ठीक है, वो हमने एनुअल रिटर्न में ठीक कर दिया था। दैट इज एब्सोल्युटली ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सतीश गोयल जी। सीमा तोसनीवाल जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी। आकाश गुप्ता जी, सुरेंद्र कुमार जी, आलोक अग्रवाल जी, प्लीज आस्क योर क्वेरी। सपना गुप्ता जी, डू यू हैव एनी क्वेरी? हेलो सर। हाँ जी सर, हमने एक इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड फाइल किया था, करीब 4 महीने हो गए हैं। हाँ, असिस्टेंट ऑफिसर ने हमसे एक रिप्लाई मांगा था, वो हमने फाइल कर दिया, लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं आया उसके ऊपर। क्या कर सकते हैं सर उस केस में हम? उस केस में आप एक प्रॉपर लेटर के थ्रू अपने रिफंड एप्लीकेशन, उसकी डेट को रेफर करते हुए और उसके जो एक्नॉलेजमेंट है उसको नीचे में लगाकर, और उसके सब्सिक्वेंट जो लेटर फाइल किया है उसको भी नीचे में लगाकर, उसका रेफरेंस देकर आप एक रिमाइंडर लेटर दीजिए। और रिमाइंडर लेटर CC में हायर अथॉरिटी को भी दीजिए, उनके ज्यूरिसडिक्शन एडिशनल को, और कमिश्नर ऑफिस में भी CC रिसीव कराइए, जिससे टाइम भी आ सके। ओके सर। सेकंडली सर, एक क्वेरी और थी मेरी। हेलो। हाँ जी हाँ जी जी सर, हमारे एक क्लाइंट के लिए उन्होंने वो फेक इनवॉइसिंग का नोटिस इशू कर दिया है, जबकि हमारे क्लाइंट के पास पूरे डॉक्यूमेंट है, ई-वे बिल है, बिल्टी है और बिल है पार्टी का। उसका अभी एंटी एविजन वालों ने ये नोटिस भेजा, वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे पास कमिश्नर से लेटर आया और हम इसको डिसअलाउड करेंगे। इस केस में क्या करना चाहिए सर हमको? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके ट्रांजैक्शन पे आप श्योर है, बोनाफाइड है, तो आपका फुल राइट है, आप उसे कंटेस्ट करिए, उनसे बोलिए कि आप ओरली कुछ मत कहिए, अपना जो कहना है रिटर्न में दीजिए, डिमांड नोटिस दीजिए, हम आगे कंटेस्ट करेंगे अगर आप। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अभिषेक वत्स जी, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी। अभिषेक वत्स जी। जी देखो भैया, मेरा कहाँ नहीं लो, कितनी देर से बोल रहा हूँ, देखने को जाना कहीं तो जाऊँ ना, घर ही बैठा रहूँ क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ अभिषेक जी पूछिए।
हाँ जी, नमस्कार सर। सर मेरा हाँ। क्वेश्चन ये था कि जैसे ये 36(4) में जो हम 10% के हिसाब से प्रोविजन बेसिस पे हम आईटीसी लेते हैं, अगर हमने इस समय स्टैट ऑडिट किया और हमने देखा पूरे साल में इस रूल को फॉलो नहीं किया गया, मतलब हर मंथ में डिफरेंस है, लेकिन ईयर एंड पे जाकर वो मैच हो गया, तो क्या हमें सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट पे, या फिर वो आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा हर मंथ में जाकर? देखिए, स्ट्रिक्टली लीगल स्टैंड पॉइंट से दिस इज अ मंथ ऑन मंथ कंडीशन, बट आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ईयर एंड पे अगर सब चीजें मैच हो रही हैं तो इफेक्टिवली एसएससी इज एट नो लॉस। और इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट आप तब पे कराएंगे, उनको तब भी उतना ही पे करना है अगर फॉर एनी रीजन आगे उनका अपहेल्ड होता है। 10 साल बाद पे करेंगे जहां टैक्स पूरा हो चुका है तो इंटरेस्ट तब भी उतना ही। सो मे बी इफ दे कैन पे इंटरेस्ट, इफ इट इज नॉट सब्सटैंशियल अमाउंट, मे बी यू कैन आस्क देम टू पे। अगर वो लड़ना नहीं चाहते, अगर लड़ना चाहते हैं तो लीगली बात में दम है कि हमारा पूरा साल का क्रेडिट मैच हो रहा है और हमारा मंथ ऑन मंथ में कभी मैच ना हुआ, बिकॉज द रूल इटसेल्फ एंड द सेक्शन इटसेल्फ आर इन चैलेंज। तो आपको एक प्रैक्टिकल कॉल लेनी पड़ेगी डिपेंडिंग कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से बात करें, आप पे करा दें, बहुत अच्छी बात है। आप ना पे कराएं, एक डिस्क्लोजर करके छोड़ दें, दैट इज ऑल्सो आई थिंक इक्वली। Yeah. So thank you. I think Akash ji, you want to ask anything? Devendra Bhattija ji, Surendra Kumar ji, you want to ask anything? Otherwise, we will have the queries which are there in the question answer module. How to revoke the cancellation if 180 days already lapsed? आई थिंक सर ये हमने अभी क्वेरी आई थी उसके पार्ट में हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया था। Great. Then Nilesh Ajmera ji, if assessee died due to COVID-19 and his legal hire want to continue his business in this case, what is due date for compliance? Any extension given? I think इस केसेस के लिए where the proprietor of the business has passed away, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक फॉर्म नोटिफाई किया है जिससे effectively the entire functionality of GST can be transitioned to the legal heir। तो उस फॉर्म को आप यूटिलाइज करके सारा ट्रांसफर करा सकते हैं। एक चीज जो मैंने अपने डेलिब्रेशन में रेफर करी कि कोई भी फॉर्म की फाइलिंग जो अप्रैल 15 से और मई 30 के बीच में ड्यू डेट जिसकी पड़ रही हो, वो आप मई 31 तक फाइल कर सकते हैं। तो आप प्लीज उस फॉर्म को मई 31 तक फाइल कर दीजिए और ये सारा बिजनेस आगे उनका लीगल ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। Yeah. CA Girish Mohan Gupta ji, any interest charged from customer is liable to GST. But what if we charged any interest from supplier or deduct any liquidated damages from the payment to supplier? Will it also be liable to GST? If yes, any section reference? देखिए सर ये थोड़ा ओपन, गिरीश जी ये थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इंटरेस्ट जब आपने चार्ज किया और आपने कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस जब आपने चार्ज किए, इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 15 जीएसटी का बड़ा क्लियर कट है कि अगर आप कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने सप्लाई के अगेंस्ट तो वो वैल्यू में इंक्लूडेबल होगा। आपको उस पर जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, उसी रेट से जमा कराना पड़ेगा जो आपके प्रिंसिपल सप्लाई पर है। और लिक्विडेटेड डैमेजेस की अगर हम बात करते हैं तो डिपार्टमेंट हिस्टोरिकली सिंस द टाइम ऑफ सर्विस टैक्स एक एंट्री जो एम्बेड की गई थी 2012 के बाद कि to tolerate an act or a situation or to refrain from doing an act or to do an act at the direction of any other person, उस एंट्री को जीएसटी में भी कंटिन्यू किया गया है। और कोई भी लिक्विडेटेड डैमेजेस को डिपार्टमेंट अपने एंड से उसी एंट्री में कवर करने की कोशिश करता है, बट वो बहुत सारे लीगल बेसिस पे सेपरेटली चैलेंजेबल है। तो डिपार्टमेंट कंटेस्ट करेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उसमें वो एक्चुअली जीएसटी की लायबिलिटी है या नहीं। या और सिद्धार्थ जैन जी इज आस्किंग प्लीज 180 डेज वाला क्वेश्चन ही वांट टू रिप्लाई अगेन। ओके, या 180 डेज में देखिए सर, लॉ में अगर हम बात करें सिर्फ स्पेसिफिक बेनिफिट अगर आपका कैंसिलेशन हुआ है और स्पेसिफिक बेनिफिट में स्पेसिफिक टाइमलाइन है जो पहले 30 डेज की थी अब मैक्सिमम 90 डेज की हो गई है। और आपका केस क्योंकि 180 डेज का है सो इट इज एक्चुअली डबल द अमाउंट जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक रिलैक्सेशन दिया। आप एक चांस ले सकते हैं अपने कमिश्नर के पास एप्लीकेशन फाइल करके अपने रीजंस बता के क्या रीजंस हैं जेन्युइन नॉन जेन्युइन, और देख सकते हैं कि वो क्या कॉल लेते हैं। उसके बाद भी अगर आप उसे परस्यू करना चाहते हैं देन द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी टू गो टू द हाई कोर्ट एंड अगेन टेक अ चांस कि वो आप डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ करते हैं।
There is no third remedy. Yeah. Chirag Jain ji, please ask your query. Utkarsh ji, please ask your query. Unmute yourself. Hello. Yeah. Yes, sir. Good afternoon. Afternoon, Actually, I had a query regarding that the export which we are making with payment of tax, for which the refund will be auto claimed by the shipping bill itself. Sir, which are the goods yet notified for this year? Is there any list available? Actually, I have not seen it. So it's actually, yeah, you've not seen it because it's not there specific to goods as of yet. However, what we have seen in our experiences, practically the customs portal has started raising objections. जैसे कि कुछ हमारे EOU units थे, export oriented unit. So वो भी EOU units have been placed at par with normal taxpayers, and they were also utilizing this option wherein they were undertaking exports on payment of tax, and they were also claiming IGST refund. But now customs has specifically stopped them from doing so, and now they've left with no other option but to undertake export of goods without payment of tax, which has resulted in huge accumulation of ITC. So good wise जो आप बात कर रहे हैं, we'll have to wait and watch because the final. Okay, sir. अगर shipping bill पे if on the shipping bill it is written that the the IGST amount, क्या clearing it with that क्या sustain हो जाएगा sir? तब refund आ जाएगा अभी अगर अप्रैल मंथ में ऐसा हुआ है? आपका पॉइंट मेरे को क्लियर नहीं हुआ, प्लीज दोबारा बताएं। सर शिपिंग बिल में हमने जब क्लियर कराया है अप्रैल में, तब जीएसटी पेड विद पेमेंट ऑफ जीएसटी कराया है, तो शिपिंग बिल पे लिखा हुआ आता है कि जीएसटी पेड, आईजीएसटी पेड अमाउंट। तो फिर वो हमको अभी रिफंड मिल जाएगा या फिर उसका जब 3V फाइल हो जाएगा अप्रैल का तब वो क्वेरी आएगा वापस? जैसे आपने ईओयू के लिए तो क्लैरिफाई कर दिया सर, पर जैसे जो नॉर्मल हैं उनके लिए पूछ रहा हूं। नॉर्मल के केस में अभी हम नोटिस नहीं कर रहे किसी केस में रिस्ट्रिक्शन आ रहा हो, तो लेट इट गो बाय एंड इट विल हैपन इन द वन क्वेश्चन सर। या थैंक यू उत्कर्ष जी। देन अर्पित शाह जी। हाँ उत्कर्ष जी पूछिए। सर एक सेक्शन 77 में रिफंड होता है सीजीएसटी एसजीएसटी की बजाय आईजीएसटी अगर पे कर दिया हो या वाइस वर्सा। सर इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट एज सच नोटिफाइड नहीं है, पर डिपार्टमेंट में हम जब भी अगर गए हैं इसके ऊपर तो हमेशा वो सेक्शन 54 को रेफर कर देते हैं, और उसके कारण से वो अगर जैसे 2 साल एक्सपायर भी हो, 2 साल अगर बीत गए हैं तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर कंटेस्ट ही करना पड़ता है। क्लाइंट कहता है अगर छोटा अमाउंट है तो फिर कंटेस्ट क्यों करें? तो इसमें क्या रेमेडी रहे कि भाई क्लाइंट को भी हमारे नुकसान नहीं हो और भाई ऐसे भी। देखिए टाइम लिमिट की जो बात है, टाइम लिमिट इज स्पेसिफिक टू सेक्शन 54 रिफंड जोन, एंड सेक्शन 77 इज अ स्पेशल section cast because of the special situations which have arisen due to the specific nature of GST law, wherein it was easy, basically it is difficult in certain situations to determine whether it's an intrastate transaction or an interstate transaction. And that is why, since if any tax has been paid but later it is found out that the tax would have been IGST in place of CGST, SGST, then if you see the law even grants extended benefit that there will be no interest liability also. So it's a special provision granting special benefit. In my personal view, the 2-year time limit is not applicable. Department is coming up from a limited understanding on this. Practically, I connect with the point that you're highlighting. If the amount is not too much, it's better. The call has to be taken depending on the quantum involved. If the quantum bada hai, of course, you need to move forward, get a rejection order from them, and file an appeal or better file a writ. Otherwise, if the amount is minimal, there is no point in correct petitions. सर इसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स मान के कर सकते हैं आगे एडजस्ट, यानी 2 साल बीत गए हैं तो भी? I think if you contest it there and then, that is rather better, because till that point you have a valid case. Once you design it in some other manner, तो आप अपने फैक्ट्स को अपने अगेंस्ट कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, because there is no specific provision allowing you to do so. उत्कर्ष जी, we are having lot Okay, sir, number thank of queries. उत्कर्ष जी, हम बाकी क्वेरीज पूछ रहे हैं प्लीज। या थैंक यू।
Arpit ji, please ask your query. Arpit Saj ji. Hello, I Yes. am audible, sir. Yes, yes. Sir, one of my clients prepared one invoice in May 20, and which was a sale invoice and interstate sale, and we filed a GSTR1 and saw that invoice and paid accordingly tax. Now, sir, in March 21, means after 9 or 10 months, we found that that invoice was wrongly prepared by the client, and which was already cancelled, but they forgot to inform us. Now, sir, in March 21, when we filed GSTR1, we cancelled that invoice. But how can we take credit back? Sorry, when was the initial reporting done? Which month? May 20. May 20. And yes. How did you cancel that invoice? Through credit note? March 21. No, how did you cancel it? You're saying you cancelled it. How did you cancel Sir, GSTR1 in GSTR1 cancelled that invoice. See, cancellation, that is actually for incorrect reporting, since आपने वो tax already pay कर दिया था ना? हाँ सर, मई में ही पे कर दिया था ऑलरेडी. GST था क्योंकि इंटरेस्ट रेट था, तो हमने वो पे कर दिया था, और जब मार्च 21 में हम मालूम पड़ा तो वो GST1 फाइल करते, उसके अंदर वो कैंसिल इनवॉइस का जो ऑप्शन आता है उसमें 00 अमाउंट करके वो इनवॉइस एमेंड इनवॉइस के अंदर जाके 0 कर दिया था. Okay. So now you're going to claim the tax adjustment for it. Yes. And was the purchaser aware about it? या आपके अपने एंड पर ही ये सारा आपने मैनेज कर दिया परचेजर को? नहीं, हमने ही कर दिया यहाँ से, और परचेजर को बोला ना तो उसने ऐसा बोला कि हम आपको सामने से सेल का इनवॉइस दे देंगे रिवर्स. तो सर बड़ी अमाउंट है, तो फिर वो इनवॉइस के बिना कैसे हो पाएगा वो सब? मैं बताता हूँ. I think a better way to do it had been that had you spoken with the purchaser and issued a proper credit note. So rather क्या होता कि आपका इनवॉइस तो रिपोर्टिंग हो ही गया था, अब आप बता देते उसको और वो क्रेडिट नोट से रिपोर्टिंग करके उसका एडजस्टमेंट क्लेम कर लेते. That would have been a better, more streamlined way to do it. अभी भी अगर आपको कर सकते हो तो सजेशन है कि आप वही करें, जिससे आपका अमाउंट अगर बड़ा है तो आपका टैक्स एडजस्टमेंट इम्पैक्ट. ओके. और ये सर क्रेडिट नोट वाला जो आपने ऑप्शन दिया वो करंट ईयर में कर सकते हैं? हाँ, अभी तो आप सितंबर तक कर सकते हैं ना, आपका फाइनेंशियल ईयर होता है. ओके सर. Thank you, Arpit ji. Piyush Jain ji, please ask your query. हेलो. हाँ पीयूष जी. सर, कंपोजिशन से रिलेटेड मुझे एक क्वेरी है कि यदि कंपोजिशन में हम अपना जीएस नंबर कैंसिल कर रहे हैं तो जो हमें टैक्स पे करना है वो कितना पे करना है? 1% पे करना है या जो इनपुट स्टॉक में है हमारे पास में उतना पे करना है? नहीं, आप कैंसिल कर रहे हैं कंपोजिशन. हाँ, जीएस नंबर कैंसिल करना है कंपोजिशन टैक्स पेयर वाले को. तो कंपोजिशन जो मेरे ख्याल जब कंपोजिशन में कोई होता है तो उसको आईटीसी तो इन फर्स्ट प्लेस ही अलाउड नहीं होता. बिल्कुल आईटीसी अलाउ नहीं है, लेकिन अगर नंबर कैंसिल कर रहे हैं तो स्टॉक में जो गुड्स हैं उस पर इनपुट टैक्स तो रिवर्स करना होगा ना. बट कौन सा इनपुट टैक्स? तो फिर जो स्टॉक पर है उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा 1% से. क्यों 1% क्यों पे करेंगे आप जब आप कंपोजिशन से बाहर आ रहे हैं? तो यानी कुछ भी नहीं करना, उसमें टैक्स पे करना ही नहीं है. माय अंडरस्टैंडिंग इज कंपोजिशन में से अगर कोई बात आ रहा है तो उसको ना इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और then he simply and what you are going to be after coming out of composition, you are going to surrender the business, close the business, or what? Close the business. अच्छा, if you are going to close the business, so the law talks about कि जब आप क्लोज करेंगे तो दो चीज बोलते हैं कि आप उस गुड्स को अगर सेल करने वाले हैं तो आप गुड्स अगर सेल करते हैं तो जो सेल पर टैक्स बनेगा वो, अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आईटीसी का जो रिवर्सल बनेगा वो. तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी. अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं सर तो क्योंकि आपने कोई आईटीसी नहीं लिया है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सल. ओके, नहीं बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बस कंपोजिशन से हम बाहर आएंगे. तो कंपोजिशन से आप बाहर आ रहे हैं, आपने आईटीसी कोई लिया नहीं है, सो यू कैन हैव अ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट फॉर यू टू पे बिकॉज़ यू already incurred tax cost at the time of purchase by foregoing ITC. सर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा हमारा, क्योंकि इन फ्यूचर हम गुड्स को सेल तो करेंगे. In my opinion, you are not required to pay any tax.
Okay, okay, sir. Sir, one more query. Yes, sir. Please Hello? ask your query. Hello? Raj Chandra ji, please ask your query. Raj Chirania ji, you want to ask any query? Yeah, sir, certain questions are there. Anil Agrawal ji, for revocation of cancellation, we apply through portal. My question is whether the application in delay beyond 30 days will be automatically go to a commissioner or joint commissioner, or we have to apply manually. So there is a Local. circular. The circular Yeah. is giving detailed guideline. The circular can be referred to, and of course, since now this window has been opened, accordingly the portal will also be refined. And in the meanwhile, a manual application can always be moved. Legally, what is allowed cannot be restrained by merely the non-functionality. Yeah. Then we are having Sanjay Kapoor ji, taxation of GST on for mutually association had been clarified by GST and IRS self in 2021. Why interest liability be arised from July 17? Is this provision is fundamental valid when government itself not cleared at that time? So I think that's a point. Your point is certainly taken, and on this also there are separate views amongst various learned people. So in the first place, what we were talking about when we said interest is because now the department is going to create a demand against all the people who have not paid tax, right? Because it's a retrospective in operation. And when you mention that why should there be any interest and you're referring to that clarification, while I connect with that clarification, let me also bring to the table that retrospective operation in itself is a question mark that what would be the interest obligation actually. So this is a point which will only emerge once the litigation goes to the court. The only point to highlight this was the kind of implications that this brings at the present stage. Yeah, thank you. Then Durgesh Babuji, please guide whether composition dealer liable to pay tax under section 93 RCM, like paid on transaction charge, transportation charge. I think composition taxpayers are covered for the liability to pay tax under reverse charge. Not even this. If composition dealer is purchasing any goods or any supplies on which he's purchasing from unregistered person, even then he is liable to pay the applicable tax under reverse charge. He has to incur that ITC cost. Yeah. CA Sushil Agrawal ji, water supply through tanker to builders and other persons, whether exempted supply or not. I think it's a very specific question, sir. I cannot recall right now. Maybe I can look into it and advise you. Yes, yes. Then Saurabh Garji, it means under section 151, commissioner may call for the information of other branches also which are not in his jurisdiction. Yeah, this is going to happen, and let me share a personal experience also with you. In around 2014-15, when the Snapdeal, Flipkart, all of these were growing businesses like anything. At that point, we had also seen that because Snapdeal and Flipkart were supplying goods all over India. So when they were supplying, so the CEO of Snapdeal was sitting in Delhi, in Gurgaon, and the goods were being supplied in Pune, Maharashtra. So this GST is at least a national law, but there in Pune, a local municipal levy was levied, and from there they were issuing notices to the CEO and the chief financial officer sitting in Delhi. So this is most likely going to happen. Other jurisdictions, they will certainly seek information, and that is where the various jurisdictions will then get into process. And if any proceedings are initiated at one place, since they will seek information from another place, maybe those authorities will also then initiate their proceedings. Yeah. Then Richu Bansal, one of my clients is having a flour mill who mills wheat on behalf of the state government of West Bengal for PDS, Public Distribution System. The atta is thereafter sent to the government distributors. The crushing charges is billed to the Food and Supplies Department of the state. And this service is an exempt service as per the state, but recently notice has been sent
to my client from GST investigation department claiming for GST from retrospective period. Although we have filed a writ petition, but for precautionary purposes, filing regular GSTR 3B from last few months to discharge liability. The state government is not accepting the GST invoice. So shall we file GSTR 1 in such scenario? If yes, then should it be shown as B2C supply? No, but since you are already taken that position and a specific exemption is in place, and you've already approached the High Court, then why did you change your approach? I think you should have not changed your approach. You should have continued with the same approach, because then this itself can become a because this itself can become a question. So if you're clear, if you're sure that you're entitled for that exemption, then you should have continued with the same stand. And see, if it's exempted B2B, B2C, the government is not accepting, you simply please continue with your old stand. Then we are having queries from Sanjay Khandveji, very good friend of mine from Durg Bhilai. He is asking, one second, yeah. In the case of refund against the export with payment of tax, despite of applicability of duty of export, the refund is received by the assessee, in which department has issued notices now after 2 years. How do deal with such notices as the interest becomes the huge cost for the assessee? Okay, so point that they're highlighting here is, sir, that in case of exports on payment of tax, there is a specific restriction that if any goods are liable to export duty, for such cases, no GST refund shall be given. So I think they're highlighting that point. And if there is a case of mistaken refund or incorrect refund that has been received, had the assessee taken any steps to repatriate that amount of refund? Had they communicated to the department that they received these funds? If they have, that communication should be brought forward and should be given to the requisite department now. If they have not done and they are not entitled for that refund amount, they should certainly pay that back. For the interest component, they can certainly contest that they had per se not claimed for refund. They had simply filed their export documents. It is the department who has proceeded on suo motu to give the refund, in as much as if any liability was there on them, in the first place, it is the department's own misconstruction, and hence for which they cannot be held liable. Yeah. Ashish Agrawal ji, can I file a refund for August 2017? No, I think it's 2021 now, sir. It's more than 2 years. The refund is maximum 2 years. And 2 years from the relevant date of filing of return or something. I think 2017 would not be covered. Richu Bansal ji, in case of refund for export under LUT, for involvement of foreign currency, realization within 30 days is mandatory. But what about cases of export to Bhutan? Is realization mandatory within days? How many days? So for Nepal and Bhutan, they've always been a special category countries, and the government has always kept special kind of considerations for them. I think Bhutan per se has some exception. So you can check. I cannot recall that particular notification. You can check. I think for Bhutan, they are allowing receipts in INR also. And there is a national engineering case judgment also, celebrated judgment, which had come in the service tax times. You can take a reference of that also. Shashank Gupta ji, any interest charged from customer is liable to GST. But what if we charged any interest from supplier or deduct any liquidated damages from the payment to supplier? Will it also be liable to GST? If yes, any section reference? So I think the answer is same, sir. The only thing that changes from the supplier is that you will be then, the department will try to color it and cover it under this category, that is to tolerate an act or a situation or to refrain from an act. And there, then you need to distinguish whether it will be covered or not. That is a complete legal distinction depending on the facts of the case. Yeah, thank you. CA Sri Harsh Kesarwani ji,
can the case law of DY Bethel Enterprises versus State Tax Office be used in case of notice under Form GST ASMT 10? Here my client had paid GST on purchase. He also have tax invoice, but this is not visible in 2A. Yes, sure, you can refer. Yeah. Dharmendra Sinha ji, in case where time period of 90 days is crossed for revocation of cancellation of registration, what is the way out for revival of same registration number? So the way out is only that then you will have to file a mercy petition. You cannot certainly claim it as a right. Mercy petition is then it is handed in the hands of the department. Whether they agree to it or they don't, most likely you can go to the High Court, and if the High Court finds merits, it's a mercy petition. मतलब आप गुजारिश कर रहे हैं कि देख लीजिए हमारा केस जेन्युइन है, कंसीडर कर लीजिए. वो करते हैं नहीं करते, it's cannot be said. Yeah, Akash Gupta ji, query is that the department has cancelled the registration due to non-filing of reply. After that, I have filed the revocation of registration, but department has not replied yet. So you can send a reminder to them. Reminder letter. Yeah. Then Biswanath Sarkar ji, sir, if some goods has been returned after 1 year, can the assessee claim the tax paid as input credit? So, in case of goods return, how will you claim the credit? If the goods are returning on the base of credit note has a time limit of September. If the goods are returning through any other mode, some people are planning it through back invoicing. Then, if in case of back invoicing, you can do it. Otherwise, in credit note, the department will challenge it. Yeah. Please specify whether tax of 2017-18 onwards is to be submitted through DRC 03 and why ABT interest, and why about interest on that, and what if client is covered in composition scheme rather than normal scheme. Should I repeat? No, sir, मैं पढ़ लेता हूँ. The query, some other query has come up that is gone. Okay. So we'll ask to put the query again. Yeah. We'll ask to put the query again. Sure. Please put the query again. Rishi Jain ji, sir, my question is, my client has made an interstate outward supply and made the bill mentioning IGST, but at the time of filing the GSTR 3B, they deposited the tax under CGST and SGST. So Rishi ji, they can, under section 77, like we had discussed earlier, they can claim a refund and correct tax IGST can be paid. Yeah. Then Arpit Khandelwal ji, there is any provision for revocation of registration if time limit for application has been already expired? I think, sir, we've a number of times you've already answered this. Yeah. Then Sandeep Janji, a goods vehicle is traced. Department raised a demand. Supplier paid tax through DRC 03. Then can we show such bill in GSTR 1? If yes, then there will be mismatch between sales in GSTR 1 and sales in GSTR 3B. So there will not be a mismatch if you can report it in DRC 1 and you can report it in GSTR 1. And normally what happens in such cases that while the department asks you to deposit the tax in DRC 03, normally what happens is that DRC 03, if it's a valid case, it is contested and then you have to go into appeal. That is the right channel. You should properly report it in GSTR 3B and pay the tax. That's the correct channel. And that is why it is involving double payment of tax, which the department was earlier not able to ensure. So the correct is that you pay the double tax, only then you will be entitled to challenge the DRC 03. So that's the correct channel. Yeah, thank you. C.A. Sandeep Jain ji, after amendment in section 16(2)AA, that for an eligible ITC bill should be reported in GSTR 1, then what would be relevance for 105% credit for financial year 2021 in GST audit or 9C to be filed? So till the period, because presently the entire availability in GSTR 2B has not been notified. That is a proposed amendment. That is not effective.
So presently for the month of April, the 5% condition is very much there. For the month of May, 5% condition is going to be very much there. So to that extent, since it is very much there in the law, you can you can certainly consider that at the time of 9C and 9S. Yeah, thank you. CA Rohit Jainji, godown is leased out to collateral management company, X Star Agriculture Advice Company for agricultural produce storage. Then GST is liable on rent received or exempt for storage of agricultural produce. If liable for GST, can we opt for composition service at the rate 6%, and franchisee agreement with the company is valid for exempt the rent? Yeah, you can. I think most likely it will be exempt, and otherwise, if it's not exempt, you can certainly apply for compensation. Yeah, for financial year 2021, is GST audit by CA or cost accountant to be done? I think Anuj, as of now, the GST audit is in place unless and until we will be having the approval of each and every state government. Then only the at the central level it can be decided. So as of now, that provision is there. Correct me if I'm wrong, Shashank ji. Yeah, sir. That is the position, because till 1920 they are already made it clear, and as sir is saying, so still we can say that it's there. Yeah, Ashish Maheshwari ji mentioning 4 crore is compulsory for assessee having turnover below 5 crore in GST returns. Yeah. On invoices also. Yeah. Then godown is leased out to collateral management company. I think already answered. Then my company is having jewelry business and have accumulated ITC from that business. Now same company started oil business, buying goods from farmer and selling it to customer by charging GST. Department is saying you cannot use jewelry business ITC. There is nothing in law to correlate like this ITC. No, in fact, my suggestion is otherwise, that there is no one-to-one correlation required. If it's the same entity, if it is the same entity and they both have the same business housed in the same entity, I think the cross-utilization can be there. Yeah. Then Devendra Sardaji, if supplier entered purchase bills of my client after September of next year, and these bills are not showing in annual return of current year, but in GSTR 2A of next year, can I take ITC of that bills entered by purchaser after September of next year? No, you can. Yeah, thank you. Pushpanjali Tripathi ji, what are the options available for assessee other than to go for writ petition if bank account has been provisionally attached? Other than writ petition, you can question the authorities that and you can highlight the difficulties. But see, that is more or less pointless unless the officer is very judicious. So that is why we are suggesting filing the petition. Yeah. CA Sushil Agrawal ji, RCM on exempted goods, that is cattle feeds, applicable or not? That's a very specific question, sir. I cannot answer. Yeah. Manish Patni ji, if a GTA who was under 5% GST without ITC opted for 12% GST with ITC with effect from 1st April 2019, but could not claim the ITC of capital goods, then is there any option available now? So please see Rule 43. There is a specific provision dealing with it. You can avail it. Yeah, thank you. What are the options available for assessee other than to go for writ petition if bank account has been provisionally attached? I think we already answered that. Yeah, Deepak Saini ji, I have one question regarding IGST paid exports to be restricted. Which exporters are restricted on this? So it is still awaited. There is no final conformity on it, and it is still awaited. Yeah. Shashank Gupta ji, queries related to interest on GST refund. Refund application filed in December 20. Refund 05 approved in February 21 within 60 days, but actually refund credited in bank account in April 21. Here interest is claimable on GST refund. Yes. Yeah, Raju Janji, if ITC credit is to be taken as per 2B, then if we have received a credit note for goods returned during the month and that credit note is not filed by the supplier within due date,
then should we take credit as per 2B or should we show it as a reversal in that month itself? Just one. You can wait. Both the options are available. Yeah. Right. Then we are Richu Bansalji. One of my client is having a floor mill. This is answered. This is answered. I think we already answered. In case of refund for export under LUT, I think this also we answered. Yeah, this also. Godain is leased out to collateral management company. This is also answered. Anjali Goyal ji, in case of works contractors where input was at higher tax rate and output supply at lesser rate, the assessee had huge ITC in credit ledger and also a good amount of TDS deducted in cash ledger. What to do now? See, typically these scenarios are covered under inverted duty structure, but sadly in case of services, no refund is allowed even if there is inverted duty structure. So no other option but to retain that amount and wait for something to happen. Presently, no option. Yeah, Shashank Gupta ji, query is related to interest on GST refund application file. Already answered it. Yes, sir. Yeah. Then Siddharth Jain ji, whether composition dealer has to pay tax under RCM if he purchase from unregistered suppliers. Answered, sir. Already. Manu Tayal ji, my company is having jewelry business This and also regulated. This Already also. answered it. Yeah. Yeah. Then Richu Bansal said this matter is under protest and matter of floor mill industry in West Bengal. Okay. Vipul Goyal ji, my question is that my assessee GST number get cancelled and I have filed application of revocation, but AO again cancel the same. So appeal is only option available for revocation the cancellation order. Yeah, Vipulji, what are the reasons? You need to look into the reasons why he has re-cancelled it. And if the reasons are valid, you can certainly go for appeal. Certainly go for it. Assessee has 2 GST numbers out of 2 numbers. He is claiming the input tax credit, but somehow the client has made the application to the company and transfer all the input from the GSTN in which claim to another GSTN. The assessee not claimed the input on another number. What is the solution? Anand Monji is asking. Anandji, I think you need to word the query a bit better because it's not coming out clearly. So if you could please resend it or something. Yeah, Manisha Rawat ji, ITC be reversed on the basis of GST or 2B? See, 2B is a correlation mechanism. जो 2B में आपका आ रहा है वो क्रेडिट आपको लेना है, उससे 5% और एक्सेस ले सकते हैं. तो 10 लाख आ रहा है, 5% और जोड़ लीजिए उस पे और उतना क्रेडिट आप ले लीजिए, उससे ज्यादा जो भी है तो वो आपको नहीं लेना है. If that is the case, then of course you will be looking at reversal. Yeah, thank you. Gaurav Agrawal ji, what is the extended time limit of exemption for filing GSTR2 for small taxpayers? I think we already covered this as the part of our session. Yeah, Godown is leased out to collateral management company. Already answered. ये आंसर कर दिया था सर या दोबारा से पढ़ना था? कर दिया था सर. We already done. Yeah, Sefali ji, my one of client unable to file GSTR 3B since 2017 due to system failure error. I raised many tickets on behalf of clients, but no action is taken by department. Is there any other option to raise query to department? Shefali ji, this is a very, very long period that you're mentioning. I think you should directly approach the department, not merely raise tickets. You should write to the GSTN separately also, to the commissioner also. And if they don't answer, you should immediately move an application to the respective court also. Yes, yes. CA Ajay Jha ji, RCM amount for 1920 deposited in April 21 will assessee able to take ITC in April GSTR 3B 2021. RCM, my personal view is RCM, whenever you deposit the tax liability, on that date you become eligible. So no need to look at time limits. Yeah. Ajay Jha ji, again below 5 crore turnover monthly payment for quarterly return file for April 2021 is 9th June 2021 instead of 25th May. Please confirm. I think we already did that as part of our session. We already mentioned.
Ajay Agrawal ji, party had not submitted his GST return since registration. As such, department has cancelled his registration since 8th January 19. In December 20, party approached department that he wanted to submit his return and want to deposit due tax. Department had opened his registration for the period up to January 19. Party has paid due tax till January 19 and filed his return. Thereafter, he approached department for further period. They refused what to do. As such, department is cancelled since this. I think there is a big gap. If you see, in January 19, it was cancelled. December 20, the party approached the department. So there is a very big time gap. And then he's saying that department has opened his registration for the period up to. Party had paid tax till January and filed his return. Thereafter, he approached the department for further period. They refused. They refused what, sir? They are not reinstating a registration or what? I think this is a case which needs to be looked in more detail, and we would not be able to answer these limited times. Okay. Then please specify whether tax of 17, 18, 18, 19, 19, 20 to be paid through DRC 03 and what any interest applicability and SSC is in composition scheme. For any past period, you can pay in DRC 03 and interest rates as provided will be applicable. Yeah. Then Devendra Bhateja sir, one of my client purchases some goods from supplier. The invoices already shown in GSTR 2A, payment made through banking channel, transport bill GR is also on record, but the department not accepting our invoice. Department said the invoice is fake invoice. So you contest it, sir. I think we took it as a live query also. You contest it. Please contest it. Yeah. If SSC is covered in composition scheme, any tax of year 17, 18, 18, 19, 19, 20 is there, is payment to be made through DRC 03 and interest applicable on that. Already answered? Yes, sir. Answer. Anjali Goyal ji, in case of works contract. This also we answered. This also. Yeah, we already answered. Then Ritu Jain ji, yeah. What are the options available for assessee other than to go for writ petition if bank account has been provisionally attached? This we've answered. This we've answered. Yeah. Then Durgesh Babuji, HSN code in mandatory in GSTR 1 without any turnover limit? So see, that's the kind of anomaly which is there in the GST system. And it's also, see, HSN, they say that up to this turnover, no requirement, beyond this it is required. But more or less, if you see, in every case, HSN requirement will come either for practical. So it's always better to report. Yeah. Vibhor Sharma ji, a merchant exporter is purchasing goods at 0.1% from manufacturer. Is any document required by merchant exporter to be submitted to GST department? Yeah, a detailed list of documents is required. And for this, you need to refer the notification because it's not just one document. There is an entire procedure which has to be followed. The shipping bill has to mention the name of the seller. So there is a whole list of procedure and documents, and please follow. Jatin Asnal ji, how can a composition dealer file ITC 3 from financial year 17-18, in which year he has changed from normal to composition? GST portal is not allowing. If the portal is not allowing, sir, you need to approach the GSTN network. And if that doesn't answer, then you need to write to the jurisdictional office and the GST council. Yeah. CA Shashank Goyal ji, can ITC be transferred from a dissolved partnership to individual partners proportionately? Only specific cases are covered. It has to be a business transfer, merger and acquisition. If it is covered under that, yes. If it is not, then no. Yeah. Then Vibhor Sharma ji, a merchant exporter is purchasing goods at the I think already answered. Yeah. Yeah. How to show sale and purchase of used old vehicle in GSTR 1 and 3B in case of registered dealer under regular scheme? Like a normal invoice, like a normal sale. Yeah. Then Rekha Punjwani ji, if GST is cancelled by department due to non-filing of return and we filed return with all late fees, I filed final return 2 in time, then whether should I revoke it? My client want to cancel it. So should I revoke and cancel or I should not do anything?
as I did all needful like return file and final return to file. So, see, this is a unique case, but since you already what the client also wants it cancelled, for a safeguard, since all the returns have been filed, you can simply write a letter that we are agreeing with your cancellation and we do not want to pursue it any further. That will help you in the future. Yeah, Anand Monji, during 1819, the assessee has claimed the input on X GST number and filed all the return, but in the month of September 19, company has transferred all the input on Y GST number. Assessee has not claimed the input on Y GST number. Now the department has issued the notice of short payment of tax in 1920. What we have to do? Not claimed meaning? Anandji, can you clarify what does it mean by not claimed and how did they transfer the credit? See, he is telling that during the financial year 1890, the assessees claimed the input on X GST number. Correct. And filed all the return, but in the month of September 19, company has transferred all the input on Y GST number. Assessee has not claimed the input on Y GST number. Now the department has issued the notice of short payment of tax in 1920. What we have to do? वो दो GST नंबर का चक्कर है सर. दो चक्कर है और वो भी बात क्लियर नहीं है सर कि X से Y पे कैसे गया, फिर Y ने क्लेम कैसे नहीं किया और फिर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स कहाँ हुआ. So this, I think these 3 points he needs to clarify. Yeah, Raju Jainji, goods have come from Delhi to Mumbai through GTA, and payment is made to GTA branch of Mumbai, and he has given cash receipt of Mumbai. RCM to be paid is IGST or CGST and SGST. IGST. Yeah, thank you. Deven Bhattacharya ji, one of my client purchases some goods from suppliers. The invoices already shown in GSTR 2A. Already answered. But he is asked recently only. Siddharth Jain again, whether excavation of mud is exempted from tax in case of works contract service. Most likely it should be exempted, but it also depends what's the ultimate purpose of that excavation. So I would request you to please have a relook at the exemption notification, make exemption notification. Rekha Punjwani ji is asking to whom I have to write letters for this. She was having one query, na? Yeah. So she should write to the jurisdictional commissioner and she should also write to the GST. Yeah. So, and number of queries are there. I think some members want to ask any queries. Shravan Kumar ji, please ask your query. Himanshu ji, please ask your query. Himanshu ji, you want to ask any query? Alok, Shravan Kumar ji, you want to ask any query? Surendra Kumar ji, Akash Gupta ji. शशांक जी 2-4-5 मिनट और ले लेंगे, क्वेरीज है कुछ? Sir, 2:30 I have another commitment, so the session was. मुझे पता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे पता है, एक आध क्वेरी देख लेते हैं. We have taken input. Last 2 queries let us take and then please. Yes, because you have to take lunch also. So yes, Anil Agrawal ji is a very listener. You have also Anil Agrawal from Jabalpur is appreciating the efforts and deliberation of Shashank ji. And then Anand Monji, I think most of the queries we have already taken. Then Mr. Tripathi, what are the options available for assessee other than to go to writ petition if bank account has been provisionally attached? This also we had answered, sir. So see, because what will you do other than that? They have blocked it, you will go to them, you will plead that don't do this, we have this practical difficulty. Now the officer, if he is judicious, he will consider, but if he doesn't consider, there is no method for appealing unless there is a demand order. You can only appeal against demand order, right? So because there is no alternative remedy, that is why we are suggesting that you go for the writ. Yeah. The last question, I think Sefali ji ka question we have already taken. Then Manu Tayal ji, sir, my company is having jewelry business. You have already taken, I think. Yes. And have accumulated ITC. Can the case law of DY88 that also you have taken? I think most of the queries you have already taken. These are repeating query. Whether RCM applicable on exempted goods or not, I think already taken. This we've already taken. Already taken. Yeah, Rohit Jain ji, go down and lease out to the collateral management company
I think most of the queries have already taken. So thank you very much, Shashank Gupta ji, for your marathon deliberation. And I think more than 1 hour, 1 hour 20 minutes you have given for to answer the queries. And I think lot number of queries are still there. And next time we will have the time of 3 hours of Shashank Gupta ji, so that 1 hour can be in the deliberation and 2 hours can be in the question answer session. चेक जरूर भिजवा दीजिएगा शशांक गुप्ता जी के पास, या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर भी कर दीजिएगा जब क्लाइंट से पेमेंट वगैरह आए. So thank you very much, Shashank Gupta ji, and Honorable Nikhil Gupta ji, our convener of Trans-Hindon, and Raghvendra Sharma ji, our founder of the Trans-Hindon CP Study Circle, and PC Jain ji, and of course my brother Vipul Nagai ji, a very prominent social worker who is doing really great for CA profession, for the future chartered accountants students, and for the society at large, for being with us. So over to CA Nikhil Gupta ji. Thank you, Shashank Gupta ji, for your wonderful and knowledgeable deliberation. Thank you, Anuj Goyal ji, for your time, and thank you all the members for your patience. Yeah, still around 400 members are there on the Zoom platform, and others are there on YouTube. So I'm really indebted to all of you that in spite of this corona pandemic, we are devoting ourselves for the knowledge enrichment, and which will be really good for ourselves as well as for the trade and industry, and in turn for the society and nation. I will request all of you once again that please ensure that you yourself and your family members are vaccinated. Institute of Chartered Accountants is trying to have the vaccination drive everywhere, whether it is Delhi, whether it is Ghaziabad, whether it is Noida, and other places also of at other branches of Central Region as well as outside Central Region. So please take very good care of yourself and your family members. Thank you, Shashank Gupta ji. Thank you, Nikhil ji. Thank you, sir. Thank you, Nagai ji. Thank you, Raghvendra Sharma ji. Thank you, PC Jain ji, and all the members present here. Thank you very much. So nice of you. Have a good day.